आज के इस कार्यक्रम में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हमारे विजेता अपने रचनात्मक अनुभव साझा करेंगे। इसमें असमिया से हेलो। आज हमारे बीच में असमिया से दिगंत ओझा जी, बांग्ला से जया मित्रा जी, बोडो से देवबार राम सियारी जी, डोगरी से राजेश्वर सिंह गाजू जी, गुजराती से किरीट गोस्वामी जी, हिंदी से क्षमा शर्मा जी, कन्नड़ से तम्मर नारायण कोमर जी जो तम्मर बिगार के नाम से लिखते हैं, कश्मीरी से हमीदुल्ला वानी साहब जो कमर हमीदुल्ला साहब के नाम से लिखते हैं, कोंकणी से ज्योति कोंकलकार, मैथिली से वीरेंद्र झा, मणिपुरी से नाओरेम लोकेश्वर सिंह, मराठी से संगीता राजीव वर्वे, नेपाली से मीना सुब्बा, ओडिया से नरेंद्र प्रसाद दास, राजस्थानी से विश्वामित्र दास, संस्कृत से कुलदीप शर्मा, संताली से गणेश मरांडी, सिंधी से मनोहर निंगाणी और तमिल से जी मीनाक्षी, तेलुगु से प्रतिपाका मोहन और उर्दू से जफर कमाली साहब अपने रचनात्मक अनुभव हमसे साझा करेंगे। मैं अब ये मंच श्री माधव कौशिक जी के हवाले करता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि ये अपना वक्तव्य संक्षेप में दें। मैं अब आमंत्रित करूँगा आदरणीय माधव कौशिक जी। नमस्कार मित्रों, वाकई ये पुरस्कार अर्पण समारोह के बाद अगले दिन का हमारा ये जो सेशन होता है वाकई बड़ा प्रेरणा देने वाला होता है, क्योंकि सभी लेखक अपने अपने अनुभव बताते हैं। हाउ दे बिकेम ऑथर्स, व्हाट वर देयर डिफिकल्ट लाइफ, व्हाट वर देयर एम्स, हु इंस्पायर्ड देम। आई रिक्वेस्ट यू टू बी ब्रीफ and I also request you to please read your paper either in Hindi or English so that everybody can understand it. सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ असमिया के पुरस्कार विजेता दिगंत ओझा जी को। दिगंत ओझा। Respected all. I am an ordinary writer of Assamese, which is from tradition of 1,000 years. The songs, lyrics, the ballads, and the fables of this language, and the contribution of each of its predecessors are the underlying spirit of my thought and meditation. And I am grateful to my mother, who happens to be the first individual to introduce me to this realm of thoughts and ideas. Where does the mankind stand in the humdrum race whereby unquantifiable human wants? What confusion with fight between tradition and the desire to change, drive with so many complexities of human mind? How is the relationship among society, individual, and the collective life? I have only tried to delve deep into this during the last few years and afford to realize society and history with my limited capability. My writings, both past and present, have dealt primarily with the area of social science. This has pushed me to have a voracious hunger for reading across interests and themes. I have done only one thing with mindfulness. In the process to observe the society, I have valued motion over emotion, rationality over
Each step in the way to destination is perhaps more valuable than the destination itself. These treatments are what our readers and critics look for, I hope. All the creative people live in a hope to reap a good harvest, to actualize one's efforts, to better one's life, to add quality to the society at large. These are the hopes that every farmer, artist, sculptor, and even writers have sacrosanct. But in today's world of unbound human and societal progress, where a myriad of human thoughts dwell, what can writers of my caliber contribute at large? The answer is perhaps to disseminate thoughts, ideas, and reflections. Maybe this is the hesitation of each of the writers. With such doubt, I go on writing. My award-winning book, that is Dangor Manhor Hadhu, is also a product of the same process. The man who cajoled me into the writing for children was none other than our son, Soil. It is under his constant efforts that this book, Dangor Manhor Hadhu, is realized, both in its idea and in manner better. This has pushed me all the way to stand here on this august platform. But I am not sure whether I am inspired or embarrassed. Yet, I have accepted this award in the name of those children who read this book and wrote criticism, gave lecture with reference to this book, and said it to be a good read through various mediums. This fondness of the children is my supreme achievement. At the same, this award is dedicated in the name of those children too, who have been at least inspired by my book or will be inspired in the years to come, and who will dream about dedicating their lives with the pursuit of science for the well-being of society. The children are the most harassed folk under the sun. The physical and mental oppression of them in homes, schools, and other social functions have become a simple phenomenon. Time changes, so does society. Yet, children are not allowed to shape themselves the way they want. The superimposition and policing of morals, values, ideas, perspectives, and expectations on them is an everyday experience. We are the victims as well as perpetrators of this heinous, inhuman convention. In retribution of the harm that has been done towards them knowingly or unknowingly, whatever minute and constructive one would do for them can at best be called an abuse. I am honored that my ablution or apology has received your acknowledgement and gratitude. Thank you. Namaskar. Thank you, Digan. Now I invite Deva Mitra, Bengali author, awarded author, Madam Deva Mitra.
First of all, I want to thank Sahitya Akademi for giving me this award for writing for children. क्योंकि मैंने एकदम बचपन से कहानियाँ सुनते सुनते बड़ी हुई है. My grandparents on both the sides, other relatives aged, or even my mama, all of them I had to tell stories. Those were not always told to me. They were discussing stories. They were going to hear kirtanas. They were reading the Ramayana or Mahabharata aloud to a group. And I used always to put an eager ear on those stories. So I think this is my turn to give out those stories, hand over the stories to the children who have to take the baton. And for the rest of my life, बाकी जितने दिन बचे हैं, मैं अपने को एक ही परिचय से जानना चाहती हूँ, that is a किस्सा गोई, a storyteller. It is not because I love only to write stories for children. I think it is kind of a duty for anyone who can hold a pen or can tell a story. To tell stories to children, particularly about what they inherit from this world and from our society, our country. Our society always had a rich culture of storytelling. Not only the folk tales and fables, our epics, Puranas, even the Upanishads are knit around motifs of stories. Ramayana and Mahabharata, both the epics, are told in 100 of different ways to all the people in all the different parts of this country, and how they are being localized by the storytellers is a wonderful thing. This was also true about the lives of the families. It is not only about the broader society, it was very much a part of our family life. We used to listen to stories about our ancestors, somebody with some peculiar history or some bent-up mind in our own family. We used to listen to stories from where we have come and where we have settled now, and who are the other ancestors than immediately ours own. So there were scores of stories knit in every family, and as the children, they used to sit together particularly for the night meal. They used to hear those stories repeatedly. This hearing of stories, family stories repeatedly, is a very, very old practice in different parts of our society. Particularly, I can tell because I know a little about them. The Santals, the Mundas, and many of the Adivasis, they have a culture of telling and retelling their family stories, their clan stories to the younger ones. We also have that kind of rituals also. Giving away a lamp for the ancestors in the month of Kartika, or telling a story at somebody's first rice is taken. It's a common practice. Now we know that with the changing routine of urban life, this practice is disturbed. And perhaps this is really a very big cause why many of our urban children, particularly educated teenager children, they feel alienated and depressed because they don't
feel them to be themselves, to be rooted somewhere. They can't feel the root in the society, neither in the family. They often feel all left alone. It is the stories, the family stories, the social stories that can bind the children together, give them a sense of possession, give them a sense of being. Restoring this old practice can be a way out from the ever-increasing menace of alienation and depression young people are confronting. Traditional stories of most societies automatically impart a feeling of unity between humans and their natural surroundings. There are so many stories about animals, about trees, talking like human beings and interacting with human beings. It also impacts some basic human values in the mind of those young creatures. So, teaching dry lessons of environment, social or personal crisis and ways to fight them becomes needless. Good stories are often intimate documents of history, at times even deeper than history books, for they do not only record incidents, they also send more meaningful signals to the readers. Childhood is the most beautiful part of a human's life. The children possess the capacity to be happy under all the circumstances. How much grueling their circumstances might be, most of the children, they find their way to enjoyment. I have seen children playing in the hell of stone quarries, but they were using the shovels or other machineries for pulling one another through that dust of a stone quarry, and they were having their fun. So I also like greatly to hear stories from children. They have fantastic ideas. The way they look at the elders' world, the way they look at their surroundings, we often fail even to understand that. I love to hear stories from children because they have ideas we can't even imagine of. When I write, mostly I write about beautiful things. The beauty of life children have around them, even in a life of poverty, in a life of depreciation, there is beauty. There is beauty. I strongly believe in that. I try to talk about the treasures human beings naturally inherit simply because they are born into the world. I do not like to show poverty or illness as a curse or a reason of being distressed, but rather try to tell about incidents where by love and mutual help, children themselves have overcome those situations and even can turn evils into good. Most of my stories tell about joy and beauty, of simplicity and love. I do not have to fantasize or imagine situations, but have many times come across cases those are more beautiful than we can imagine of. This is, I find, to be more true in the simple life of the common people. Only we must have the power to look at them carefully and recognize. That is why I want to be an attentive listener of writers like Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, Tara Shankar, Trilokya Nath, Asha Purna Devi, Mahashweta Devi of my own language, and some storytellers of other countries like Alice Walker, Leslie Marmosilko, Simon Ortiz, among many, many others. These writers, at one hand, are the best storytellers who believe in the positiveness of life, and they are, side by side with the children themselves, these writers are my teachers. These writers
recitals carefully, storytellers like the aged or ancient men and women of villages, rural singers, narrators, artisans, homemakers, and the likes. They are the creators and beholders of our living history, the stories. I shall love to act like a bridge between my readers and my teachers. Namaskar. Thank you, Jaya Mitra ji. Now I request all the authors to be brief. एक बात ध्यान से सुनिए. We have 24 authors and we have circulated your lectures. Some lectures are very long and you can edit them for yourself. हमने ये जो आयोजन है ये 1-1.5 बजे तक खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं साथ चल रहे हैं, साथ मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो जिनके लेक्चर बहुत बड़े हैं वो उसके रेलेवेंट पोर्शन ही पढ़े, ठीक है? क्योंकि अगर हम सबको 5-5, 6-6 मिनट देंगे तो ही ये 1-2 बजे तक खत्म हो पाएगा. तो प्लीज बी ब्रीफ. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, यू शुड नो. और बाल साहित्य का लेखक तो जितना संक्षिप्त होता है वो उतना बड़ा होता है. बाल साहित्य का लेखक ही बड़ा करेगा, फिर बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे उसे. बाल साहित्य के लेखक को तो बूंद में समुद्र को भरना होता है. एंड यू नो दैट आर्ट. नाउ आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर देववाल रामचियारी जी, बोडो अवार्डी. योर लेक्चर इज आल्सो very long. Please, your relevant portion about. We want to know your creative process. How you came to the field of writing and children writing. वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बाल लेखन में कैसे आए और किस तरह के आपके अनुभव हुए, आप क्या कहना चाहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है. धन्यवाद. Namaskar, Khulumbai. Honorable celebration, respected Bal Sahitya Akademi Awardees, friends, and ladies and gentlemen. Just I would like to share my feelings and experiences as a writer. Bodo language was included in 8th schedule of Indian Constitution in 2003, as per BTC Accord 2003. After inclusion of Bodo language in 8th schedule, the new literary journey of Bodo language began, and Sahitya Akademi also has been giving them award for each year since 2005 for the Bodo language. But Bal Sahitya Puraskar have been giving for Bodo language since 2010. Bodo is a tribal language. I am to belong to Bodo community and to my mother language is also Bodo. Although I can speak and write Assamese like my mother language, but my medium of instruction was Bodo from primary school. I was born in very ancient village named Jahaikona near Boroma, Baksha, about 85 kilometers from Guwahati. My parents had never seen school. It means very illiterate. Being a son of poorest illiterate parent, asking these prestigious award was out of imagine, out of dream for me. My parents doesn't know what is award, what is Sahitya Akademi. 27 years in 1994 with my mother language. I am not a good writer, since I try to express my feelings, imagination, experiences, and bittersweet of my life with my writings. Most writers begin their writings with poem, but my writing began with a short story named Thautineva. It's been talkative in 1994, which was published in the Bodoland Koran, a Bodo bi-weekly newspaper. Since then I have been writing short stories, poems, tales, prose, etc. continuously. The Awardees is my first short story book published in 1998.
The second short story book was published on Andre Thapa, published in 2008. Actually, I was a short story writer. Although I had to write and publish the following books, observing the necessity of leaders, the pressurized of various Bodo social organizations and institutions. Tailiburi Solo 2002, Folktales, Bilboni Solbata 2004, Folktales, Siskin Ang Arigabang 2010, children novel translated by me, The School Boys. Langganan Bukhari Boto 2020, children novel. The Langganan Bukhari Boto is my first children novel. In this book, Sahitya Akademi, the great literary organization of India, selected me to confer Bal Sahitya Puraskar 2022. I feel proud of it and lot of thanks to all the dignitaries of Sahitya Akademi, because Sahitya Akademi has given great responsibility, giving that prestigious award to me, which will inspire me to create more children literature in the future with a great effort. The main theme of the book, an ideal teacher can change a family or a society. Bigger wasn't the ideal teacher, he did the same through a girl of a very poor family named Shamati, who was a caretaker of a baby of a family. She was a talented student and she could show her performance on various activities at school. So, Bigger convinced her head of the family to allow her to school continuously. As Bigger's suggestion, the parent began to open temporarily tea store in the local weekly market and family could earn something. So we got chance to continue her study from family, her own sweet home after 1 year and put success in the life. Because her parent was seller of vodka, Vidya and Shamati is the main character of the novel. A senior teacher of my school one day suggested me after seeing my first story books, Awardees. Such books are available in Bodo literature. It's okay. But more needs children literature books for both the students and new generations. Let's begin your writing on children literature. I thought that saying was right. Thanking to Sir Krishna Radha, I began my journey on the children literature. I collected many folktales, magazine, newspapers, journals of various languages and translated into Bodo from various languages and then published the books as mentioned above. One thing should mind that need study more to write more articles. Everybody knows that today's children are tomorrow's citizens of country, shows the resource of country. I have great faith that the children literature is a weapon of a new generation which can uplift their talents. The development of all kinds of talents begin from childhood. The future of a country depends on their quality of talent of students. So, granary of children literature should be rich. But granary of Bodo children literature is very poor, due to which reason the students belong to Bodo unable to uplift their talent as possible. Still now only 24 languages of India are included in its schedule. But what will do the remaining languages? Those are not included in the same. So, Sahitya Akademi Awardees have great responsibility for their upliftments of religion, tradition, culture, languages. Those are still not included, those are still direct, those are only spoken languages. Otherwise, India never can develop their culture, religion, languages, literature, education, etc. So, through this platform, I would like to share my suggestions to all the esteemed guests, awardees, dignitaries, ladies and gentlemen. And please come forward and to go forward to cooperate them so that they can also share this platform with us, because they have also great dream to stand and set their hands with us on that platform. I believe and I know no one single writer's right or for honor or great achievement. They have been writing since long. They will have been writing for the better interest of nation, for the particular literature of the language. So I also have been trying to develop
the children literature Bodos. Already I have begun the translation of Nandana Bukhanakoto, award winner novel into Assamese language. I am going to be published a new children novel Laukarankam is many beginning recently. I have been collecting moral stories and folk tales for various languages to translate to Bodo language. I have been trying to organize the new generations to enrich the Ganaria Bodo children literature, but it needs more platforms for the children so that they can publish their creation and inspired by elders. I was chief editor of monthly magazine Nuzul for 11 years, which was published in 2006 continuously for 15 years. It was great platform for the writers. In the long run, I hope my small literary contribution will help to enrich the general Indian literature. My literary creation will be accepted by writers of various languages and has been encouraging to the new generation to begin their literary journey for languages of dialects, regional languages and national languages in the present and future of India. Giving my warm special thanks to all, I conclude my short speech. Jai Hind. Thanks, Devaki. Now I request Rajeshwar Singh Raju, Dogri Awardee, to please come on the dais. Respected Madhav Koshik sir, Vice President Sahitya Akademi, and all awardees representing different mother tongues and auspicious gathering. Namaskar. I am Rajeshwar Singh Raju from Jammu. I take this opportunity to thank Sahitya Akademi for promoting literature by honoring the writers of different languages with prestigious Sahitya Akademi awards in different categories every year. The continuous literary activities, whether online or offline, are also providing platforms for the aspiring talents. What I wish to state at this moment is that I am writing in English, Hindi and Dogri language for the last more than 30 years now. And why I write? I think the whole credit goes to what I read during my childhood. My parents had a passion for reading and I found prominent magazines of yesteryears like Chanda Mama, Gudiya, Nandan, Champak, Twinkle, Indrajal Comics, Amar Chitrakatha, and other literature at my home at a very young age. Yes, of course, when you used to visit grandma's home, she also used to tell us stories. It all inspired me to write poetry initially, and then stories, plays for theatre, Akashvani and Doordarshan next. The process is a continuous one. Let me share with you all that some precious moments that I used to cherish with my kids at Mumbai, where I was posted quite a few years ago, was a backdrop that instigated me to pen down some stories for children. I used to tell them stories in episodes. It was just like the serials with children's psychology as a focal point. And having all the interesting characters, sequences and situations wherein they were also playing lead characters. Yes, when my wife was busy in watching daily soaps, I used to entertain my kids and myself with our own developed plots with innovative inputs from my kids. It was a fun-packed creative inputs, I hope. But one thing is quite sure that my children liked those stories and waited anxiously for me to come back from office. And almost every time before retiring to bed, it was story time. Yes, these stories were verbal and spontaneous. When I got transferred back to Jammu, I made up my mind to write for children, but it was not as simple as I used to feel as a storyteller in Mumbai. Honestly speaking, writing for children is not so easy. You have to convey in a very simple way and maintain interest as well as the pace. Otherwise, the children may get bored. The treatment has to be different or distinct one because in this era when they have so many means of entertainment simply at a press of button, you have to connect with them, which is possible only if you have something rare to offer to them, which I found is possible with only treatment. It is important to mention here that initially there was trend of storytelling predominantly by grandma, but from joint families we have advanced towards nuclear families. Storytelling is badly missed in recent times. What I feel in these circumstances is that
Parents have to take a call now. They should connect with their children emotionally through this medium of expression and pass quality time in each other's company. It was a basic instinct that prompted me to pen down Sikhmat, a collection of 17 stories that has bagged me Sahitya Akademi Bal Puraskar 2022. I tried that all stories be woven around beautiful plots that are lovable, creative, sustain interest of readers, and leave a deep mark. Each story should be unique. I preferred simple language, easy to connect, and each story should have a moral value and be served like sugar-coated tablets to children. I have experimented with these stories that an atmosphere is created during formal gossip within the family, and then father tells the story as per the wishes of his children. The situations and sequences that give birth to stories are captivating and attract the readers, I assume. I think that I have made clever uses of family characters at home, like father, mother, and their children in their daily tasks to convey moral values, which are part and parcel of children's literature, but none of these lessons have been forced upon. Rather, the children themselves travel through these stories and extract the thought behind each story, as these are simply keeping in mind children's psychology. At this precious moment of life, I wish to thank my parents, late Sri Sansati and late Mr. Maya Devi, who made me a writer and always inspired me to face challenges and move ahead firmly with all willpower. I also wish to thank my wife Bal Sahitya, my daughter Mrinalini Singh, and son Arjun, who became the characters of the stories. My sincere thanks to my family for supporting me, because we writers always extract time to write from family time. At last, I would like to add here that in fact, I enjoyed a lot while writing these stories. I became a father, a storyteller, and a kid at the same time. It was a beautiful feel to step in childhood again. I wish to step it again and again and enjoy that captivating feeling. Thank you. धन्यवाद राजू जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ गुजराती के पुरस्कार विजेता किरीट गोस्वामी जी को। किरीट। नमस्कार, जय जय गरवी गुजरात। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मेरे गुजराती बाल कविता संग्रह सिस्टोली ने कंप्यूटर से लेके के लिए मुझे मिला है। यह पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं साहित्य अकादमी तथा निर्णायक दल का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यह पुरस्कार मैं अपने स्वर्गीय माता पिता और गुजरात के सारे बच्चों को समर्पित करता हूँ। मैं पिछले 17 सालों से लगातार बाल साहित्य का सृजन कर रहा हूँ। मेरा प्रमुख और प्रिय स्वरूप है बाल कविता। मैंने गुजराती बाल साहित्य में बाल कविता को अपने अंदाज में प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया। नई पीढ़ी के बच्चों के मन की बात मैंने कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। मेरा यह मानना है कि नई पीढ़ी के बच्चों को नए विषय, नए कल्पन, नए उपकरण, नई फैंटेसी से भरपूर कविता देनी चाहिए। और ऐसा करके मैंने बहुत सारे बच्चों से प्यार और खुशी पाई। मेरा विचार यह है कि बाल साहित्य हमेशा से उपेक्षित साहित्य रहा था, पर अब नहीं रहा और न रहेगा, क्योंकि नए सर्जक बिल्कुल नए आधुनिक बात, विज्ञान, तकनीक, नए उपकरण की बात लेकर आ रहे हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हम बच्चों के लिए कुछ करने का हमें अवसर मिला। मैंने अपने जीवन का महत्तम समय बच्चों के साथ बिताया। मुझे बच्चों के बीच रहकर नया सृजन करने की प्रेरणा मिली। बच्चों के स्कूल जाकर मैंने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनमें बाल साहित्य के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया। गुजरात में लोग और बच्चे खासकर मुझे टोपी वाली माँ कहकर बुलाते हैं। मेरे प्रयासों का मुझे बहुत ही सुफल मिला है। बाल साहित्य में बच्चों के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। मेरी मातृभाषा का गौरव हो, ऐसा सृजन मैं हमेशा करता रहूंगा। इस पुरस्कार से मुझे खुशी के साथ एक नई दिशा भी मिली है।
मैं बाल साहित्य में बहुत कुछ नया करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आज हर क्षेत्र में बदलाव आ गया है, तो बाल साहित्य में क्यों नहीं? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बाल साहित्य के क्षेत्र में आगे भी बहुत कुछ नया प्रदान करूं और बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदी की जानी मानी लेखिका क्षमा शर्मा जी को। आप सभी को नमस्ते और माधव जी और साहित्य एकेडमी का आभार कि आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिला। अक्सर वैसे मैं अक्सर पढ़ी हुई चीज लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ती, लेकिन यह समय की सीमा है इसलिए मैं लिख कर रही। अक्सर जब अखबारों, पत्रिकाओं, चैनल्स या रेडियो से जुड़े व्यक्ति इंटरव्यू करते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि आपने लिखना कब शुरू किया और क्यों। उनकी बातें सुनकर बचपन की स्मृतियों की कुंडियां खड़कने लगती हैं। मैं अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य होने के कारण माता पिता, बड़े भाई बहनों की बेहद दुलारी थी। बड़े भाई साहित्य के विद्यार्थी और साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ने के लिए तरह तरह की किताबें दी। लड़कियों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। जेंडर की बातें आज ज़्यादा होती हैं, मैं आज से 60 साल पुरानी बात करता हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ने के लिए तरह तरह की किताबें दी। लड़कियों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। वे चाहते थे कि लड़कियां न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करें बल्कि आत्मनिर्भर भी बने। यही कारण था कि मेरी बड़ी बहन न केवल अपने कुनबे, गांव बल्कि पूरे जितना भी आसपास के क्षेत्र थे उनकी पहली लेक्चरर बनी। भाई साहब तरह तरह की किताबें लाते, मैं उन्हें पढ़ती और जो न समझ पाती वे मुझे समझाते। एक बार की बात है, तब पिताजी फर्रुखाबाद में थे, उत्तर प्रदेश में एक शहर है। हमारे घर में बहुत से जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, तोता, कुत्ता आदि भी थे। दिन में गाय, भैंस, बकरियां चरने चली जाती। कुत्ता और तोता मेरे खेलने के जीते जागते खिलौने थे। जानवरों को बांधने के लिए घर की दीवार से लगा एक टीन शेड था। पीछे की तरफ कंडे भरे रहते थे जलाने के लिए। यहाँ कभी कभार सांप भी दिखाई देते थे। यहीं एक चारपाई भी थी। यहीं से आती जाती रेलगाड़ियाँ, परिसर में लगे गुलमोहर, पीपल, बरगद, उन पर चहचहाते पक्षी, सामने के गोदाम पर बैठे कबूतर दिखते थे। इनमें एक सफ़ेद कबूतर भी था। तब लगता था कि ये कबूतरों का स्कूल है और सफ़ेद कबूतर उनका अध्यापक है। उन दोनों बड़े भाई साहब दिनकर जी पर काम कर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बहुत जाने वाले कवि। दिनकर जी की लगभग सभी पुस्तकें चारपाई पर रखी रहती थी। मैं भी उन्हें देखती और पढ़ती। उनमें नीम के पत्ते नाम की भी एक पुस्तक थी। तब पढ़ने पर कुछ खास समझ में नहीं आता था, लेकिन जानवरों के बाड़े के पास नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसे देख लगता शायद दिनकर जी ने इसी को देखकर एक किताब लिखी होगा। एक दिन भाई साहब कह रहे थे कि बड़े लेखक अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तब मैं छठी कक्षा में पढ़ती। पता नहीं क्या सोचा कि मैंने एक कॉपी निकाली और लाल रंग की स्याही का पेन लेकर किसी जानवरों के बारे में आ गई और फिर मैंने 4-5 लाइनें लिखी। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं क्या करती हूँ। जब भाई साहब ने मुझे देखा और पूछा कि क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कि आत्मकथा लिख रही हूँ। ये सुनकर वो खूब हंसे। उनकी हंसी देखकर मेरा आत्मकथा लिखना छूटा तो छूट ही गया। विवाह के बाद मेरे पति डॉक्टर सुधीश पचौरी की प्राथमिकताओं में मेरा लिखना पढ़ना हमेशा रहा। उनके सहयोग से ही मैं जीवन भर पूरे दिन की नौकरी भी कर सकी, क्योंकि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई। लेकिन जीवन सिर्फ हंसी खुशी का नाम नहीं है। न जाने कितनी कठिनाइयां दबे पांव चली आती हैं। बचपन में जल्दी ही पिताजी रिटायर हो गए थे। मैं अभी 8वीं में ही पढ़ती थी। वो अपने गांव वापस आ गए।
लेकिन जिन अपने भाइयों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी थी, उन्होंने पिताजी को पहचानने से भी जैसे इनकार कर दिया। मेरे लिए गांव का माहौल परिचित नहीं था। उस दौर में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती लिखती भी नहीं थी। धीरे धीरे आय के साधन न होने के कारण गरीबी और अभाव पैर पसारने लगे। अभी मैं 15-16 साल की थी कि पिताजी गुजर गए। कुछ साल बाद बड़े भाई ने तब मुझे अपने पास दिल्ली बुला लिया। हालांकि छुट्टियों में गांव जाना होता। एक दोपहर रेडियो सुन रही थी कि खबर सुनी कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। ये 1975 की बात है। न जाने क्या सोचा कि पुराने रजिस्टर से पन्ने फाड़ कर एक लेख लिखा और एक अखबार का पता ढूंढ कर भेज दिया। 3-4 दिन बाद एक परिजन ने पूछा कि क्या तुमने कोई लेख लिखा था? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने अखबार दिखाया। आश्चर्य के लेख संपादकीय पेज पर छपा था। घर वालों की नज़र में जैसे ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से मेरे लिखने की शुरुआत। दिल्ली में जब बीए कर रही थी तो लगता था कि नौकरी कर लूँ, कोई ट्यूशन ही पढ़ा लूँ, 100 रुपये भी मिले तो काफ़ी है उस समय। उन्हीं दिनों देशबंधु कॉलेज में मेरी अध्यापिका थी श्रीमती राजकुमारी प्रसाद। वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी ऑल इंडिया रेडियो की तब। भाई साहब भी देशबंधु कॉलेज में ही थे। मैं डिबेट्स नाटक आदि में भाग लेती थी। एक दिन श्रीमती प्रसाद मुझे आकाशवाणी ले गए और युवावाणी वालों से मिलवाया। मुझे पहली बार वहाँ एक कार्यक्रम करने का अवसर मिला और 15 रुपये भी मिले। ये 15 रुपये उन दिनों इतने होते थे कि पूरे महीने का खर्च चला दें और कुछ बच भी जाए। एक सहारा सा मिला कि 3 महीने में 15 रुपये मिल जाया करेंगे। इसी दौर में हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करने वाली शुभा वर्मा, जिसे मेरी मुलाकात हुई, साप्ताहिक के बच्चों की परिशिष्ट में ये कहानियाँ लिखवाने लगी। दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि में भी छोटा छोटा कुछ लिखने लगी। 1976 में लंदन पत्रिका के लिए ये हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका ही थी और बच्चों की बहुत मशहूर पत्रिका। ट्रेनिंग रखने का विज्ञापन आया। शुभा जी मुझे बहुत स्नेह करने लगी थी। मैं जानती थी कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा। जब इंटरव्यू देने पहुंची तो लंदन के संपादक जयप्रकाश भारती जी, सहायक संपादक चंद्रदत्त इंदू जी के साथ हिंदुस्तान टाइम्स के उप महाप्रबंधक गौरीशंकर राजहंस जी भी इंटरव्यू पैनल में थे। कुछ बातों के बाद राजहंस जी ने सवाल पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? जब मैंने कहा कि वे नहीं है तो उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया। उन्होंने मेरी स्थिति को समझा और ये नौकरी मुझे मिल गई। आज सोचती हूँ तो लगता है प्रबंधन का ये मानवीय चेहरा था। संयोग से पूरे जीवन मैंने यही काम किया। बच्चों के लिए लिखना भी शुरू किया। इस पत्रिका में मैं ट्रेनिंग की हैसियत से आई थी और 37 वर्ष काम किया। 11 साल मैं इस पत्रिका की एडिटर भी रही। अब तक 35 से अधिक बच्चों के लिए मेरे बाल उपन्यास कहानी संकलन छपे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, NCERT, राजकुमार किताब घर, सन्मार्ग आदि प्रकाशन संस्थाओं ने इन्हें छापा है। बहुत सी पुस्तकों का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वैसे तो बड़ों और बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है। बच्चों की लिखी गई पुस्तकों में मेरा बचपन चुपके से चला आता है। बकरियाँ, गाय, तोते, भैंस, कुत्ते, पेड़ पौधे, फूल, नेवला, नदी, तालाब, अध्यापक, अध्यापिकाएँ, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ बुआ सब आते जाते रहते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों और आसपास के बच्चों के भी कारनामे इन रचनाओं में देखे जा सकते हैं। बच्चों से कनेक्ट करने के लिए बचपन को बार बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। प्रकृति से दोस्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति की ये सारी चीज़ें, सारे नाते रिश्ते बच्चों के जीवन में किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। अब तक मैंने जितने भी स्टोरी टेलिंग सेशंस किए हैं, शायद 150 से अधिक होंगे। बच्चों के साथ मिलकर जो कहानियाँ विकसित होती हैं, उनमें भी अपना पर्यावरण और नाते रिश्ते अक्षर मौजूद रहते हैं। क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ पुस्तक पर आपने पुरस्कार दिया। इसकी 10 कहानियों में भी बदल गया रास्ता, छोटी बहन, गाय ने पुकारा, इंजन चले साथ साथ आदि कहानियाँ मेरे इसी बचपन से जुड़ी हैं। इस पुस्तक को भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। अब तक इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसका पंजाबी, तेलुगु आदि भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। दरअसल
हम जीवन भर अपने बचपन की तरफ दौड़ते रहते हैं, लेकिन बचपन इठलाता, चौकड़ी भरता हमेशा हमसे आगे निकल जाता है। हम कभी उसे पकड़ नहीं पाते। साहित्य अकादमी अपने परिवार और आप सब मित्रों का आभार इस पुरस्कार के कारण आपसे बातचीत का सौभाग्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कमल शर्मा जी, बड़ा प्रेरणादायक आपका वक्तव्य रहा। Now I invite Tamman Bigar, Kannada Awardee, to please come on the line. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dear friends, I am from Uttar Kannada district of Karnataka state. It is a district with the most of its area covered by less evergreen forest. I grew up in a village in the middle of the forest. The village blessed with the bounty of Mother Nature, full of ever-flowing rivers, waterfalls, cool breeze, sounds of animals and birds, bright clouds and starry nights. Growing up in the valley, I got a strong sense of being one with the green nature. It has an everlasting fruit, and the very thoughts make me happy. It is the same with the children. It is their world where they sing with the birds, play with the animals, swim with the rivers, take imaginary flights on the clouds, climb the trees, rest in the sun, and become part of their own world. When we understand the true nature of our children, their innocence, their honesty, their urge to be happy, it becomes easy to enter their world. All along, I have been trying to do the same. I am honored to be awarded with the Sahitya Akademi Award for my children's novel Bavali Kuhe. An effort is made in the novel to light up a sense of responsibility among our children towards our environment. The novel opens with the scene of mine explosions where the children are scared. They see the big JCBs, cranes and large machines on top of the hills of their village. A stone from the explosion is the blowed auntie's cow and it is injured. The gushing muddy water from the mine site floods the auntie's house. The villagers and children are worried. I have tried to put in perspective as to how the village children respond to the events of mining activity in their village, how they realize the bad effect of mining, how they join hands with their elders in fighting the situation, how the children become spies and smooth and so on. The novel dwells around the illegal mining activity and how the children understand the ill effects on their loved village. Through this novel, I have tried to infuse sense of unity, love and responsibility among the children towards environment. I am always drawn towards the greenery surrounding our area. The villagers, the children, I have both happy and tough times. Many of my stories and poems revolve around the village, poverty, discrimination, inequality, and many other such issues faced by the villagers. My book of short stories, Hasirurina Hudura, is based on the memories of my childhood days spent in the village. The book has earned a lot of appreciation and love from the public as well as children.
I have written 10 books of short stories and 10 collections of poems for children. Froggy and Friends is my recently published novel. The story line of the novel is a combination of reality and fantasy. I have also written a picture book and have drawn pictures and caricatures for several of my own books and also for others. I have published 27 books so far. In all my works, I have been trying to show the lives in the villages as seen by our young minds. My stories, novels, poems, and short works carry the same broad theme with different layers. It is my intention and wish that such writing should shape the growth of children into responsible citizens. Namaskar. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कश्मीरी के रचनाकार हमीदुल्लाह वाली और हमीदुल्लाह साहब को आमंत्रित करता हूँ। All the dignitaries and distinguished guests, I am Kamar Hamidullah from Kashmir, a place called the paradise on earth. I greet you all with love, respect and good feelings. It is indeed a great pleasure to be here in the galaxy of Indian writers and poets. Kashmiri is my mother tongue, though I know some other languages as well. But I love to write in my mother tongue. I have published 2 poetry collections some years back. First collection of my poems is The Fulai Chakarams, The Bilsu of Wonders. And second one is Abde Faruqi, Justice of Farukism. The third one is The Gift. It is the collection of my rhymes, poems and versified short stories written for children. I have experienced the fact that the poems for children should be short and in simple language. Children do not like poems containing direct advice and instructions. They like poems which appeal their imagination. They are delighted with poems about natural objects, natural beauty, and about the environment. But they do not like the natural objects. But they do not like the lengthy poems and the poems written in tough language. Children love catchy rhymes and musical poems. One must go deep into the psychology and interests of the children. Thanking God, during my career as a school teacher, I was able to know all these things about children. I wrote poems for them which were liked and loved by children. I tried to inculcate moral values and scientific thinking through my rhymes, poems and versified short stories. I am of the opinion that children's poems should not only delight them and appeal to their aesthetic sense, but also give them moral values, bringing them close to nature and increasing their awareness of life, enlightening their sensibilities and enlarging their consciousness to become good citizens. Human qualities should be developed in children. Keeping all these things in view, I wrote poems for them to successfully fulfill the aim. My collection of poems written for children entitled The Gift won the Bal Sahitya
Puraskar 2022. It is a great honor for myself and for my language. I thank the Sahitya Akademi for conferring on the prestigious award, the honor and also satisfaction of obtaining a recognition for my book. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद वानी साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ज्योति कुंकड़कार जी को, कोंकणी की सम्मानित लेखिका ज्योति। नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री माधव कौशिक जी, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी, पुरस्कार विजेता और श्रोता। मैं गोवा राज्य से आई हूँ, जिस राज्य पर 450 साल पोर्तुगीजों का राज्य था, जहाँ कोंकणी भाषा बोलना, कोंकणी में लिखना मना था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बंदी थी, अपनी संस्कृति सेजना मना था। हमारे पूर्वजों ने बहुत यातनाएं झेलकर हमारी भाषा, कोंकणी और संस्कृति को जिंदा रखा। पिछले साल गोवा की मुक्ति को 60 साल पूरे हो गए। इन 60 सालों में गोवा राज्य ने बहुत उन्नति की है। किसी भी राज्य की उन्नति उसके साहित्य और कलाकारों से नापी जाती है। गोवा ने भारत रत्न लता दीदी मंगेशकर से लेकर ज्ञानपीठ का रविंद्र केड़ेकर जैसे प्रतिभावंत लोग देश को दिए हैं। मैं पिछले 30 साल से साहित्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैंने साहित्य के सभी प्रकार लिखने की कोशिश की है, जैसे कविता, कथा, कादम्बरी, वन एक्ट प्ले, रेडियो प्ले, पटकथा, संवाद, संपादन, अनुवाद और बाल साहित्य। आज तक मेरे साहित्य के लिए, फिल्मों के लिए कहीं नेशनल और राज्य पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जब साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है तो एक अच्छा लेखक होने की मोहर लग जाती है, और ये अनुभव आप सबने लिया है। गोवा को लेखक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है तब माननीय गवर्नर जी, मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्री और गणमान्य बधाई देते हैं। बचपन से मेरी निरीक्षण शक्ति बहुत अच्छी थी और हमेशा मुझे दूसरों का दुख अपना लगता था। मैंने अपने आसपास जो देखा वही पहले कविता के बयान किया। सिर्फ कविता लिखी नहीं, बल्कि गोवा के जाने माने न्यूज़पेपर पर भेजी। अगर उन्होंने तब मेरी कविता वापस भेजी होती तो शायद मेरा लेखन प्रवास वही थम जाता। लेकिन अपनी कविताओं में कथाओं की झलक है, यहाँ कहकर संपादक जी ने मुझे कथा लेखन के लिए प्रोत्साहन किया। फिर मुझे कविता, कथा लेखन स्पर्धे में कई पुरस्कार मिले, मुझे समाधान मिला और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मुझे कभी भी घर वालों ने लिखने से नहीं रोका, नाटक फिल्मों से काम करने से नहीं रोका, हमेशा बढ़ावा दिया। लेकिन इसका मतलब मैं उनके लिए लिख पाती ऐसा ही नहीं है। मेरे लिए साहित्य और सामाजिक जीवन जितना महत्वपूर्ण है, मेरा फैमिली लाइफ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए रोका नहीं होगा। औरत मेरे साहित्य और फिल्मों को केंद्र स्थान है। मुझे औरत के प्रति आदर और अभिमान है। इन 30 सालों में मैंने दूरदर्शन और अन्य माध्यम से 500 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं। उनके अनुभव ने मुझे बहुत समृद्ध किया है। जैसे अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी से लेकर हिंदू स्मशान में काम करने वाली एक सादी सीधी औरत जन्नत शेख पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यह डॉक्यूमेंट्री मेरे जीवन की सबसे प्रेरणादायी अनुभव था। बिना रीटेक के बने इस डॉक्यूमेंट्री का पूरा शूटिंग जन्नत में अंतिम संस्कार करते समय किया। यह औरत सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि लॉजिकल भी थी। मेरे सवालों के उसने बहुत लॉजिकल जवाब दिया। जैसे स्मशान में भूत नहीं है, भूत आपकी फिल्मों में होती है। मैं मुद्दे से नहीं डरती, मुझे डर जिंदा इंसान से लगता है। उनका अलग कार्य और लॉजिकल जवाब के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म एक बहुत प्रभावी माध्यम है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी 4 कथाओं पर फिल्म बन चुकी है और वाचकों के साथ मुझे साहित्य के लिए दर्शक भी मिले। इंसान का अनुभव कभी खाली नहीं जाता। मैंने करीबन 1950 के पास ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उसका उपयोग मुझे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट पर लिखते हुए हुआ। अब कुछ मेरे नॉवेल मयूरी के बारे में। मुझे लगता है कि बाल साहित्य लिखना काफी कठिन काम है।
क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और उनके हाथ में हम सबसे उम्दा साहित्य देना है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को सही गलत की समझ इसी आयु में होती है। बाल साहित्य में बहुत सब कुछ होना चाहिए जो हमें बच्चों का सिखाना चाहते हैं, और उसके साथ वह साहित्य सुंदर भी होना चाहिए जो बच्चे को और किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। मेरी नॉवेल मयूरी की कहानी गोवा के छोटे से कानपुर में गांव से शुरू होती है। बिना बाप की छोटी सी बच्ची अपने नानी के घर में बड़ी होती है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर मेहनत कर सुप्रीम और पुलिस होने की सफर तय करती है। इस कादम्बरी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ किताबी पढ़ाई काफी नहीं होती। एक बच्चे का संपूर्ण विकास होना जरूरी है। शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकास और उसके साथ पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए प्यार होना चाहिए। किताबें में पढ़ना और अपनी संस्कृति संभालना की जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण खुले मैदान में खेलना। खेल बच्चों को बहुत आयु में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को डिसिप्लिन की भी जरूरत है और ये सबसे बचपन से शुरू होना चाहिए। मेरी नॉवेल का किरदार मयूरी के पास ये सभी गुण हैं और इसी वजह से उसे जीवन की एक अच्छी दिशा मिली। फिर से एक बार साहित्य अकादमी का बहुत धन्यवाद करती हैं और सगळ्या देव बरे करू अशी म्हणता, सगळ्यांना देव बरे करू। धन्यवाद ज्योति जी। अब मैं मैथिली के पुरस्कार विजेता वीरेंद्र झा जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंच पे आएं। झा साहब, आपका भी बहुत लंबा लेक्चर है, थोड़ा सा संपादित कर लें तो आपकी कृपा होगी। जी, मैंने कोशिश की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अकादमी के सचिव महोदय, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न भाषाओं के पुरस्कृत साहित्यकारगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित साहित्य प्रेमीगण, मैं सर्वप्रथम आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। महोदय, साहित्य के इस महापर्व के मौके पर मिथिला से इंद्रप्रस्थ की पावन धरती पर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। पुरस्कार के लिए मेरी पुस्तक के चयनकर्ताओं के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी कथा संग्रह उड़नछू का चयन किया है। यह पुरस्कार महज मेरा नहीं, संपूर्ण मिथिलावासियों का है, तमाम मैथिली भाषियों का है, सभी बच्चों का है। महोदय, मैथिली साहित्य में मिश्री सी मिठास है। मैथिली जगत जननी सीता की मातृभाषा है। मैं खुदकिस्मत हूँ कि मेरी पैदाइश मिथिला में हुई और मैथिली मेरी मातृभाषा रही। स्कूली जीवन में ही मैं मैथिली साप्ताहिक मिथिला में का नियमित पाठक बन गया और यहीं से साहित्य सृजन की भूख जगी। 1975 में मेरी पहली रचना छपी, फिर क्या था लिखने का सिलसिला शुरू हो गया, लगातार छपता रहा। मैथिली के धुरंधर साहित्यकारों ने हौसला अफजाई की। बाद में आकाशवाणी से दर्जनों कथाएं प्रसारित हुई। वक्त गुजरता गया, लेखनी चलती रही। फिर पत्रकारिता और वकालत के पेशे में आया और व्यस्तता के बावजूद मेरी लेखनी जारी रही। मेरी पहली पुस्तक किछु नहीं कहब कथा संग्रह का प्रकाशन 2017 में हुआ। फिर लगातार पुस्तकें छपने लगी। मेरी अद्यतन 17 पुस्तकें, 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 6 कथा संग्रह के प्रकाशन के साथ मिथिला के महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह पर केंद्रित आख्यान पर उपन्यास शिला भट्ट समेत 4 उपन्यास प्रकाशित हैं। बाल साहित्य में मेरी पहली कथा संग्रह घोघो रानी 2018 में प्रकाशित है। 20 में दूसरी कथा संग्रह उड़नछू का प्रकाशन हुआ। देश प्रेम पर आधारित बाल उपन्यास प्रण एवं कोरोना संकट पर केंद्रित बाल उपन्यास संकल्प के साथ 2 बाल नाटक छोट ठिकरक मोट नांगे एवं शपथ प्रकाशित हैं। उड़नछू में 14 कथाएं संग्रहित हैं। सभी कथाओं का उद्देश्य बच्चों को नैतिक शिक्षा देकर आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है। पर्यावरण सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों की हिफाजत पर कथाएं हैं। 5 से 14 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। उड़नछू एक गरीब बालिका अनीता की कथा है जो अभाव में भी आत्मविश्वास और परिश्रम के बूते पर शिक्षा जगत में सफलता का उड़ान भरती है और भविष्य की मनोहरी सपने बुनती है। अब दुनिया बदल गई, उस पर बाजारवाद हावी हो गया। संयुक्त परिवार ने दम तोड़ दिया, माता पिता कामकाजी हो गए। ऐसे में बच्चे घर में उपेक्षित अकेले रहकर मोबाइल पर उंगली चलाने को मजबूर हो गए। ऐसी हालात में साहित्य उनका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। आज के बच्चों का IQ बढ़ गया है।
वे केवल अपने घर आंगन और स्कूल नहीं देखते, वे टीवी और मोबाइल में समुद्र में उछलते कूदते जीव जंतु को देखते हैं, आकाश में गरजते वायुयान को देखते हैं। बदलते समय को ध्यान में रखकर हम मोबाइल लैपटॉप को साहित्य के पूरक के रूप में देखना होगा। आज के बच्चों को गोनू झा के किस्से और अकबर बिरबल की कथाओं से मन नहीं भरता। वे घर में माता पिता के तनाव, बाल हिंसा, बाल शोषण, बाल मजदूर सभी देखते हैं। ऐसी दशा में तोता मैना, गुड्डा गुड्डी, राजा रानी वाली पारंपरिक कहानियों से हटकर नए विषयों पर बाल रुचि के अनुरूप बाल साहित्य में राइम्स, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन को शामिल करना होगा। बाल साहित्य में उम्र का बड़ा महत्व है। चिकित्सा शास्त्रियों का कथन है कि 6 माह के बच्चे रंगीन चित्र वाली पुस्तक देखते हैं, 9 माह के बच्चे सुनने लगते, 1 वर्ष के बच्चे किताब झपटते हैं, 3 वर्ष के बच्चे गीत सुनकर आनंदित होते हैं, 5 वर्ष के बच्चे किस्से चाव से सुनने लगते हैं। मिथिला के बालक शिवशंकर बालकाल में ही कविता करने लगे थे। अभिमन्यु को गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, यह बात अलग है। मिथिला में 3 से 5 वर्ष के बालक को अबोध, 6 से 13 वर्ष के बालक को सुबोध, 14 से 18 वर्ष के बालक को किशोर कहा जाता है। सभी उम्र के बच्चों की रुचि अलग अलग होती है। बालक बालिका के रुचि एवं स्वभाव में भी अंतर स्वाभाविक है। गांव एवं शहर के बच्चों में भी सोच में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न संप्रदाय के बच्चों के सोच में भी अंतर होना स्वाभाविक है। बाल साहित्य, बाल रुचि, बाल मनोविज्ञान के चाहत के अनुरूप होना चाहिए। बाल साहित्य को लघु, सरस, रोचक होना जरूरी है। बाल साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ खेल खेल में ज्ञान की वृद्धि करना है। बाल साहित्य को और बोधगम्य बनाने की जरूरत है ताकि बच्चों को समझने में ज्यादा कठिनाई न हो। बोलचाल के शब्दों के प्रयोग बच्चों को ज्यादा भाता है। कथा पात्रों की संख्या अधिक नहीं हो जिससे बच्चे मानसिक रूप से उलझ जाएं। कथा सीधा सपाटा हो यह जरूरी है। कथोपनाक शैली में बच्चों को ज्यादा भाती है। बाल साहित्य में स्नेह, त्याग, सहयोग, आदर्श से भरपूर होना चाहिए। जाति, धर्म, विभेद, हिंसा, छुआछूत से बाल साहित्य को दूर रखना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है जिसका सकारात्मक असर बच्चों के दिलो दिमाग पर पड़े। बाल साहित्य को विज्ञान, अंतरिक्ष, वीरता, ईमानदारी, देशभक्ति, पर्यावरण, प्रदूषण से और जोड़ने की जरूरत है। हास्य बच्चों को भाते हैं। गायक, जादूगर, खिलाड़ी से बाल साहित्य को जोड़ने की जरूरत है। यदि बाल साहित्य श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण से मार्ग का प्रशस्त होगा जिससे संपूर्ण विश्व आलोकित होकर शांति समृद्धि के पग पर अग्रसर हो सकेगा। यह बात हमें ध्यान में रखना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ साहब। नाउ आई रिक्वेस्ट मणिपुरी अवार्डी रेवरेंड लोकेश्वर सिंह जी, प्लीज कम ऑन डायल। Good afternoon. It is a matter of pride for me that Sahitya Akademi awarded Bal Sahitya Puraskar 2022 to be for my book Contribution to which translates as Content and the President. My heartfelt gratitude to Sahitya Akademi. The idea of the book came up to me surprisingly during the lockdown imposed in Manipur since March 2020. As a part of the nationwide lockdown, which began in India. As no outdoor movement and activities were allowed, we had to remain indoors. On the other hand, it became a great opportunity for me to spend the days with my young grandson. I used to narrate him stories from local folk tales, panchantras, and so travel and whatnot. I told him all the stories that I could remember. In doing so, my stock of stories got adjusted and I had to retell the same stories. Finally, the boy became tired of the same stories. He started pursuing for new stories, which he had not heard. This was the instant that inspired to write my book, Content and the President. I began my literary journey writing short stories. However, when I tried to write a story for the children, it became a dilemma for me. It was especially challenging for me to sort out the kind of writing for the right age group of children. I had to make myself think like the way the children think. On the other hand,
a difficult matter to determine a book as Sindh's book. Shall we call the book written by Sindh as Sindh's book, or a book written by Messier Eder as the other book? Who and what will determine a book as Sindh's book? Will the reader Sindh decide a book as theirs, or will the Messier Eder reader give the answer to it? It was a tricky situation to me. Yet another sending trend in today's digital era is that children are day by day turning from reading printed books. Their medium of interest, of entertainment, joy and relation is gradually shifted towards multimedia, for example, TV, smartphone, laptop, cinema, etc. Under the circumstance, it is in fact a challenge to think the device way to attract their interest towards book. I am here again to emphasize the need to write children's book that gives not only mere joy but also arouse curiosity, invention, wonder and courage. The writing must also have elements accompanying love, compassion and support, etc. to the children towards its fellow beings, birds, animals, nature and environment. As children is necessarily always pressure to explore new things, the unknowns, to see the unseen without minding any consequence at all. The children's book needs to emphasize on the positive way and the a message of fraternity towards all. With the space of time, with the pace of time, children's literature today has evolved from its traditional form of folk tales, oral forms of songs, Awardees, myths, etc., to books trending in all ways. Development of children's brain, pleasure, knowledge, art, science, and even philosophy. My book tells the story of young village boy Tomjin, who went out in search of his pet dog. His adventure began when he met a young girl during the search. The girl was crying for her sister's bracelet, which had been picked away by a dog. She asked Tomjin to help her find the lost bracelet. She also gave Tomjin a magical bracelet under certain conditions. The bracelet had a mysterious power to show the bearer the things that wish to see when look through it. However, the violation of the condition would result to decrease of the bracelet into useless piece. It is all about Tomjin's adventure in finding his pet Dalmatian dog in search for the lost bracelet. With the help of the second magical bracelet and his journey of various exciting excavated on the way of returning the bracelet to the girl. The book consists of 20 chapters. I got an unusual delight in writing this book. It gives me an extraordinary feeling of being shipped to a world where I am present in the journey of the protagonist and the other characters in this story. I am now inspired to go on writing more such children's stories. Another thing that inspired me to continue writing such book is that children's book find readers in both adult and the children's alike. A second matter I expressed during writing this book is the appropriate insertion of illustrations. Pictorial illustrations are very necessary to ignite the fire of curiosity and intelligence in children. It was a difficult task for me to bring an understanding of adding proper pictures with the artist who prepared the illustration for the book. It has been my sincere effort to include certain important traditions and the customs of our society which are not much seen by the modern generation. I have tried in the simplest way to illustrate some of them, like sanctifying someone with fire and making him walk over a vessel on his return home from a travel. The search of a person supposedly misled by an evil by sounding the cymbals, drums, and bowling the horns, etc. My objective of writing the book are to impart the love of nature, environment, animal, and the birds in the children, and inspire them to preserve them boldly. I shall consider my fruitful if my message to the young one to
to love their own years-old traditions and customs is delivered. I am much indebted and grateful to the parents and guardians who appreciated and told me that their children enjoy my book when they are read to. I am much more indebted to the children for enjoying my book. Thank you once again. अब मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता राजीव बद्री जी को, मराठी की सम्मानित रचनाकार संगीता। नमस्कार। साहित्य अकादमी और पुरस्कार प्राप्त सभी उपस्थित मान्यवरों को मेरा प्रणाम। ये 2 दिन हमारे लिए बहुत ही सुनहरे दिन हैं। चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर हम सभी को साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ये हमारा गौरव तो है ही, मगर भारत के सभी बच्चों का गौरव है। इन्हीं बच्चों से हमें प्रेरणा मिलती है। उनका प्यार ही हमें लिखने के लिए प्रेरित करता है। कभी हम भी बच्चे थे, इसकी भी याद मन में रहती है। बच्चों में साहित्य की रुचि बढ़ाने के लिए मैं पिछले 30 सालों से अविरत काम करती आई हूँ। बाल साहित्य यह उपेक्षित साहित्य प्रकार माना जाता है। क्यों? बच्चों की भाषा में लिखना आसान नहीं है। ये कठिनतम काम है और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इसमें प्राकृतिक प्रतिभा और दर्जा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ों के साहित्य के लिए जरूरी है। मराठी भाषा में आदरणीय विद्या करंदीकर, कुसुमाग्रज, मंगेश पाडगावकर, शांता शेळके, हारा भागवत, अमरेंद्र गाडगीळ आदि साहित्यकारों ने बाल साहित्य की नींव रखी। बच्चों का विश्व बहुत ही सीधे साधे आनंद से भरा होता है। उनके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। उनके साथ हंसी मजाक करना, उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, उनसे गपशप करना, उनको पसंद आए ऐसी कविताएं उन्हें सुनाना, उनसे सुनना, ये काम मैं बहुत सालों से करती आई। बच्चे जब स्वयं रुचि लेके कविताएं एवं कथाओं का आस्वाद लेते हैं तब मेरे मन में खुशी की लहर उठती है। बहुत लगन से मैं बच्चों में काम कर रही हूँ, उनके लिए लिख रही हूँ और ये काम आज मुझे इस मकाम तक ले आया। आज तक बहुत सारी पाठशालाओं ने मुझे निमंत्रित करके बच्चों से मिलवाया है। सरकार एनआई ऐसी कई संस्थाओं की मैं ऋणी हूँ। जो बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ, क्योंकि अब महाराष्ट्र में अपनी मातृभाषा मराठी में पढ़ना लिखना कम होता जा रहा है। बहुत से अंग्रेजी माध्यम के पाठशालाओं में बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और संस्कृत भी सीखते हैं, मगर उन्हें मराठी नहीं सिखाई जाती। ये अचरज की चिंताजनक और खेदजनक बात है। इन समस्याओं का हल ढूंढना हम जैसे बड़ों का ही काम है, अन्यथा मराठी भाषा लुप्त हो जाने का डर है। इस बात पर महाराष्ट्र के शासन ने गंभीरता से विचार कृति करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्रीय होने के कारण मेरा लेखन मराठी भाषा को समर्पित है। मराठी भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा के करीब है। मैं महाराष्ट्र की कन्या हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है और राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के प्रति मुझे आदर और अभिमान है, इसलिए आज मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे साहित्य के सफर में मेरे प्रकाशकों का बड़ा योगदान रहा है। ज्योत्सना प्रकाशन के मिलिंद परांजपे जी की मैं बहुत ही आभारी हूँ। संपूर्ण महाराष्ट्र में मेरा साहित्य पहुँचाने में उनका ही बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार दिलीपराज प्रकाशन, पॉपुलर प्रकाशन, पद्मगंधा प्रकाशन, उन्मेष प्रकाशन, गमोहन प्रकाशन, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रसार समिति, इन सभी प्रकाशनों की मैं हृदय से आभारी हूँ। बच्चों तक अभिजात और ऊंचे दर्जे का साहित्य पहुंचाना यह हम सबका कर्तव्य है।
पिछले 5 सालों से मैं अमरेंद्र भास्कर मराठी बाल कुमार साहित्य संस्था की अध्यक्षा हूँ। हमारी संस्था बच्चों के लिए साहित्य सम्मेलन का आयोजन करती आई है, मगर कोरोना के प्रतिबंधों के कारण 2-2.5 साल हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ाना, लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये काम इस संस्था के माध्यम से हम करते आए हैं। अब पुरस्कार प्राप्त पीयूजी वही के बारे में। ये एक छोटी बच्ची ने लिखी हुई डायरी है। वास्तव में वो बच्ची पाएगी जिसका नाम मैंने पीयू रखा है। छुट्टियों में या बाकी दिनों में बच्चे अपने मन से क्या क्या रंजक और विधायक काम कर सकते हैं, इसकी पहचान पीयूजी वही करवाती है। छुट्टियों में बाहर न जाने का आदेश उसे माँ देती है, तो फिर घर में बैठ के क्या करें, ये सोचते सोचते पीयू ने घर में कुछ काम कर दिखाने की योजना बनाई और मन में कुछ सोच के पीयू अपने घर की खिड़की साफ करने लगी, उसे खुद रंगने लगी। धीरे धीरे बच्ची ने खिड़की पूरी की पूरी रंगाई। फिर उस खिड़की के में बैठ के पेड़ पक्षियों को निहारना उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसे प्रकृति और पर्यावरण की पहचान होने लगी और उसने डायरी लिखने की शुरुआत की। लिखते लिखते अनेक घटनाओं का, पात्रों का चित्रण पीयू इस डायरी में करने लगती है। बच्चों में सृजनशीलता बढ़ाने में इस उपन्यास का योगदान रहा है। इसी वजह से ये उपन्यास बच्चों में प्रिय हुआ है। कई बच्चों ने कोरोना काल में पीयूजी वही को पढ़ा। कई बच्चों को इस पुस्तक से लिखने की प्रेरणा मिली। बच्चों के घर वाले ने बच्चों के इस पुस्तक पढ़ने के वीडियोज बनाकर मुझे भेज दिए और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर ने पीयूजी वही पर नाट्य प्रयोग सादर किए। पुणे विद्यापीठ के विद्यावाणी की ओर से पीयूजी वही का 100 पन्नों का अभिवाचन 14 नवंबर से प्रतिदिन प्रसारित होने जा रहा है। ये अभिवाचन उन्होंने प्रांजलि बर्वे से करवाया है। प्रांजलि बर्वे मेरी लड़की है, बहुत अच्छी गायिका है और आज यहाँ उपस्थित है। आज का दिन मेरे लिए खुशी का और गौरव का दिन है कि भारत के उच्चतम श्रेणी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत इस उपन्यास को सम्मानित किया जा रहा है। ये मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ। मेरी पिछले कई सालों की साहित्य यात्रा का ये गौरव है और मेरा ये मानना है कि इसके आगे भी मैं बच्चों और बड़ों के साहित्य के माध्यम से जुड़ी रहूँगी। मेरे आने वाले उपन्यास का नाम छिपरू है। ये उपन्यास भालू के बच्चे पर आधारित है। आशा है कि ये उपन्यास बच्चों और बड़ों को पसंद आएगा। ये मराठी का ये उपन्यास कल से प्रकाशित होने जा रहा है। मेरा ये पुरस्कार मैं सभी बाल मित्रों को समर्पित करती हूँ। उपस्थित सभी मन पुरस्कार प्राप्त मान्यवर, निमंत्रित मान्यवर और साहित्य अकादमी के मान्यवरों को आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, धन्यवाद संगीता जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मीना सुबा जी को, नेपाली की पुरस्कार विजेता भी। आज के इस अति गौरवशाली कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरजनों, साहित्य अकादमी के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट महोदय, इस प्रेक्षागृह में उपस्थित पुरस्कार प्रापक मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मैं मीना सुब्बा की ओर से हार्दिक अभिवादन सहित 2 शब्द कहने की अनुमति चाहती हूँ। बीते 3 दशकों से मैं साहित्य अध्ययन और लेखन में समर्पित हूँ। मैं साहित्य में अधिक गंभीरता पूर्वक इतना आगे तो नहीं पहुँच पाई हूँ, फिर भी 2006 में एक कविता संग्रह, 2012 में दूसरा कविता संग्रह, 2 बाल कविता संग्रह और 1 बाल कथा संग्रह मिलाकर अभी तक मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। पेशे में मैं सिक्किम सरकार की एक ICDS की सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थी। जब भी मैं किसी ICDS केंद्र में भ्रमण में जाती तो ज्यादातर आंगनबाड़ियों में नन्हे बच्चों
Johnny, yes papa, eating sugar no papa, Baba, black sheep, have you anyone? यही गीत दोहरा के सुनती आई हूँ। मुझे यह देखकर अटपटा लगता है। मैंने बाल गीतों में कुछ नवीनता लाने के लिए और बच्चों के मानसिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फुलवारी शीर्षक बाल कविता संग्रह प्रकाशित किया 2006 में। इस संग्रह की कुछ कविताओं को मैंने बाल गीतों में परिवर्तित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके बच्चों को सिखाने का बहुत प्रयत्न किया। मेरी प्रयास मेरी उम्मीद पर भले ही खरा उतरा हो, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि आज वे गीत कुछ ICDS केंद्रों में गाए जा रहा है। इसके पश्चात मैंने इसी अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास में कोपिला रमहरो शीर्षक बाल कविता संग्रह प्रकाशित किया, जिस पर मुझे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार ने मुझे बाल साहित्य सृजन में नए सिरे से पूरी तरह से समर्पित होने के लिए प्रेरित किया है। इस पुरस्कार ने मेरे हौसलों को पंख लगा दिया है। बाल साहित्य के संवर्धन में समर्पित संस्थाएं ऐसा है। भारत की बाल साहित्य को समर्पित कुछ एक संस्थाओं से परिचित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह की एक संस्था अल्मोड़ा स्थित उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान में प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय बाल साहित्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इस संस्थान में 2019 में सिक्किम से प्रतिनिधि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। इस संस्थान में भारत के विभिन्न राज्यों से गैर हिंदी भाषी को भी आमंत्रित किया जाता है। यह संस्था आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित करके आ रही है, जिसमें मैं कई बार भाग ले चुकी हूँ। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि सिक्किम में युवा पीढ़ी बाल साहित्य के प्रति अत्यधिक सृजनशील है। मैं सिक्किम राज्य से हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है, जिसकी आधारशिला विज्ञान है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि आज तथाकथित वैज्ञानिक सोच रखने वाला साहित्यकारों में वैज्ञानिक सोच का अभाव है। हमारे आसपास अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं, जहां वैज्ञानिक क्रियाकलापों में संलग्न साहित्यकार आज भी कर्मकांडों में डूबा है। पुरातन से समय सापेक्ष बातें ग्रहण कर नए संदर्भों में अपनी सोच को विकसित करने से वर्तमान की चुनौतियों से जूझा जा सकता है और साहित्यकार इस दायित्व का निर्वहन वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण से ही कर सकते हैं। सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता। इस स्थिति में हमें भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पारिवारिक परिवेश को बच्चों के अनुकूल बनाने और उनमें अपनी जड़ों से जुड़ने के साथ साथ आधुनिक सोच ढालने की दिशा में काम करना होगा। बाल साहित्य की दशा और दिशा इसी सोच से निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए सबसे प्रमुख कदम जो उठाया जाना अति आवश्यक है, वह है मातृभाषा में शिक्षा। यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार इस दिशा में आधारभूत ढांचे को विकास हेतु कदम उठा चुकी है। अंत में मैं साहित्य अकादमी के प्रति पुनः तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Ravindra Bhavan, Odia Award winner, to please come on dais. Dear friends and dignitaries, I welcome you all to this august gathering.
and congratulate fellow awardees who have won Bal Sahitya Puraskar of Sahitya Akademi. At the outset, I must apologize for speaking in English. I apologize because we all won awards for writing in our own mother tongue, but while expressing, I express my views in English, a language spoken and understood by only 13 to 15% of people in the world, and in our country 10% people understand and speak English. Still, there is no denying that English is the link language for elites to which we all belong to. Anyway, literature, particularly literature for children, developed first in our country, not in the West, not in the English-speaking world. In the Western world, Homer's Iliad and Odyssey, published during the 8th century BC, were the first literary work in English in the Western world, whereas Sanskrit literature developed in the Vedic era between 1500 to 500 before Christ. Similarly, literature for children, what is the name, appears to have developed in the West during only the second half of the 11th century, whereas in India, it was developed much before the Christian era began. It is accepted by Western scholars, professors of many Western universities, that literature for children was composed during the 3rd century BC, and it had traveled to countries in the West by 16th century. Panchatantra is acknowledged by the Western scholars as the first literature for children. That apart, I do not know all the 24 award-winning books were printed in our respective mother tongues, in our respective states. What was their number? In my state, whenever a children's book is published, the publishers limit their publication number of prints to only 1,000. I do not know what is the case in other languages, though Sister Rajiv Sharma from Maharashtra told that the Maratha language is going to be wiped out. In my state, we are afraid my language may remain as a spoken language. Why? Children don't like our books. They do not get it in a attractive form at a cheaper rate. Publishers publish English books in 50,000 to 1 lakh copies. But my book is published for limited to only 1,000. When Bal Sahitya Puraskar was declared, I was interviewed by different media houses.
one question was asked to me, why your books are not available in all the bookshops? And naturally, publishers, when buyers are less, they cannot publish it at a cheaper rate with a better quality of paper, illustration. So we can't blame them. They are not here only for charity. They are doing a business. But simultaneously, they cannot also escape their responsibility towards the society, towards the children. Children are our future. All younger people, you have a greater right on this earth, on the resources available than what I have because of difference in the age. And children are reading in English. Even people at the lower ranks in the society have a craze for reading in English medium schools, reading English books, because our books are not attractive. Parents can spend money in multiple ways, but they will not buy books in the regional language for their children. Children have three sources where they can learn to become real human beings. They can grow up, but to be a human being worth the name, they have to inculcate human values. They learn it first from their parents, next from their teachers and textbooks. But teachers and textbooks prepare them to pass out examinations. Parents teach them to compete in the society. You have to be a good earning man in life. Must be a technocrat, engineer, doctor, or a good civil servant. So, human values are to be learned from books written by you and me who write for children. And what we write? Naturally, because there is not a good market, because parents and children are not very much interested in our books, we write anything. And some of us also suffer from an ego. In the Western world, I have seen authors don't mind if an editor 20 years, 30 years younger than the author edits his or her writing. But here, if I am 70-year-old or 80-year-old or a professor or a doctor and I write a book and I give it to an editor, if he edits, if he changes, I feel, why should you, are you competent to edit my book? Either you should read it. Yes. This is actually my write-up also has been edited here. I don't mind. We should not mind. The stuff must be very good. Children need good stuff, and if we don't do that, naturally they will not be interested. I must congratulate Sahitya Akademi for their announcement made yesterday. They are now contemplating to translate
books in different languages, award-winning books. That's a very good thing. That's a very good effort. Writers, I think Vice President presiding over this meeting was telling, I lead one All India Children's Literary Foundation as its president. Today it is sitting in conference, 41st conference in Awardees. I was talking to them how it is. It's a matter of regret that all the states are not present there. I told them that at least I have 24 contact persons in different states whom we can write, we can see, we can discuss, we can deliberate, we can hold seminars for the growth of children's literature. Award winning is very good. I thank Sahitya Akademi through the presiding Vice President, presiding President here. You have given us awards, you have given us opportunity to share our feelings, but much more is needed to make children's literature in our country effective, epoch-making and man-building. Thank you. Thanks, Mr. Das. I will answer some questions put by Mr. Das and I will certainly clarify the scenario. Now I request Mr. Vishwamitra Das, who is a Rajasthani award winner, आदरणीय माधव जी को नमन और तमाम सबको मेरा प्रणाम, वरिष्ठ साहित्यकारों को। सर संक्षिप्त में अपनी ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। 40 सालों की कविता की यात्राओं में सारा देश घूमने के बाद में, भीड़ का कवि होने के बाद में ये बाल साहित्य को लिखना पड़ा। इसके बारे में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि नदी के किनारे कोटा में बैठा हुआ था और वहाँ जहाँ नाला मिलता था वहाँ सारी मछलियाँ भरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना विषय बनाया जाए मेरी कविता का, बाल साहित्य का। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि 6-7 हिंदी में भी लोग, मेरे राजस्थान में वो उपन्यास है लोकताके पे, पहला ही मेरा ये बाल साहित्य राजस्थानी भाषा में आया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अकादमी ने उसको मेरे को पुरस्कृत कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। केवल माछली का आंसू मेरे को लिखना पड़ा, इस विषय को तो बनाया। इसी की एक 4 सेकंड का पढ़ना चाहता हूँ कि मानव जाति ने स्वयं के लिए अपनी न्याय व्यवस्था बना रखी है। मनुष्य अपनी समस्याओं को न्यायालय के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जलचर नवचर प्राणियों के लिए कौन सी न्याय प्रणाली है जहाँ जाकर जलजीव या अन्य जीव अपनी समस्या को रख सके, अपनी पीड़ा को बता सके। माना जाता है कि जल का राजा मगरमच्छ तो पहले ही दूरता के आंसू लिए बैठा है, जहाँ छल छिद्र के अलावा कुछ नहीं है। वो स्वयं जल जाति को समूह नष्ट करने की फिराक में बैठा है। ऐसे अपनी जाति के सम्राट से क्या आशा रखी जा सकती है? मछली ऐसा है प्राणी जो हर जीव का चारा बनकर रह गई है, उसकी वेदना पर कौन ध्यान देगा? हाँ, ऐसे जीवों की रक्षा में प्रकृति न्यायाधीश बनकर अपनी व्यवस्था के साथ खड़ी हो जाती है और उसकी व्यवस्था के सामने स्वार्थी मनुष्य असहाय बनकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है, जिसका उदाहरण है कोरोना। तो इस विषय को जल शुद्धिकरण और वायु शुद्धिकरण के लिए मैंने इसको बनाया, इसको विषय बनाया है। अंत में मैं यही कहूँगा आज के आयोजन के लिए, तमाम सबके लोगों के लिए कि युगों युगों से देश का हर क्षण परंपरा में पलता है और सारी भाषा मिलकर के मेरा भारत बनता है। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
शर्मा जी को संस्कृत के बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वप्रथम मैं अधिमंच और उपमंच विराजमान सभी विद्वजनों को प्रणाम कर रहा हूँ और थोड़ा असहज भी हूँ क्योंकि इतने बड़े विद्वजनों के बीच में बाल साहित्यकार के रूप में मुझे भी अवसर मिला है। इसके लिए मैं साहित्य अकादमी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत विद्वानों की भाषा मानी जाती है और संस्कृत में बाल साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी था। मैंने ये पुरस्कार के लिए काम नहीं किया, लेकिन मुझे एक अवसर मिला। मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर राघव कृष्णा जी, उन्होंने प्रेरित किया कि आप कुछ छंद में आपकी गति है और बच्चों के लिए प्रहेलिका साहित्य की रचना होनी चाहिए। तो ये पुस्तक जो है उनके एक तरीके से सारस्वत प्रेरणा से मैं कर पाया। इस पुस्तक को लिखने से पूर्व एक मैंने निबंध लिखा था, उसमें संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकाओं की विकास यात्रा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की थी और ये पाया था कि संस्कृत काव्य में ऐसे अनेक मंत्र एवं श्लोक हैं जिनके कोई ना कोई गुणार्थ होते हैं और संस्कृत के पंडित उनको स्पष्ट करके हमें चमत्कृत और चकित कर देते हैं। जैसे आचार्य दंडी ने 16 प्रकार की पहेलियों का वर्णन काव्यादर्श में किया है। नाट्यशास्त्र, कादंबरी, भट्टी महाकाव्य, सरस्वती कंठाभरण, विदग्धुम मंडन, साहित्य दर्पण, कामसूत्र इत्यादि अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पहेलिका साहित्य आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चरक संहिता जैसा एक ग्रंथ जिसमें कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप इसको पढ़ें तो एक आदर्श बाल साहित्य कैसा हो सकता है, इसके समस्त आचार संहिता आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार ऋग्वेद का जो नास्तीय मंडल की प्रश्नावली है उसमें सृष्टि की प्रक्रिया को इसी कौतूहल के साथ उपस्थापित किया है, जहाँ कोई उत्तर स्वयं न देते हुए बच्चे को उत्तर या ज्ञानी विपासु को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्नों के माध्यम से आप ज्ञानार्जन कर सकते हैं। पूछना चाहिए, सीखना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो जब ये लेख प्रकाशित हुआ तो ये अनुभूति हुई कि संस्कृत में प्रहेलिका साहित्य बहुत ही अल्प मात्रा में है और वही कुछ कतिपय श्लोक बार बार जो है वो संदर्भों में मिल रहे थे। तो कुछ अल्प प्रयास से कुछ श्लोक बना पाने में मुझे सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर मैंने बच्चों के लिए एक मोबाइल ऐप का भी निर्माण अपने साथियों के साथ मिलकर किया, ताकि बच्चों को कुछ ऐसा प्रस्तुत कर सकूं जिसमें संस्कृत के प्रति उनकी रुचि हो। और संस्कृत एक सरल भाषा है, संस्कृत को सभी समझ सकते हैं, सभी की भाषा संस्कृत बन सकती है। इस विचार से मैंने वो प्रयास किया। तो जब मित्र राधा मुरली कृष्णा जी ने मुझे प्रेरित किया तो एक पुस्तक के रूप में उसी ऐप से प्रेरित होते हुए मैंने बच्चों के लिए इस पुस्तक का वर्णन करने की चेष्टा की। इसमें 100 से अधिक संस्कृत पद्यों का निर्माण किया तथा बच्चों के सामने वो प्रस्तुत किया, क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक इतनी, जैसे आपके पास में पाठक उपलब्ध होता है, थोड़ा सा मुझे इसमें जो है वो समस्या रही कि पाठक जो है वो सहज उपलब्ध नहीं है। तो कुछ जो प्रबुद्ध बच्चे हैं उनके सामने विविध प्रहेलिका श्लोकों को रखा और उसको फिर क्लासीफाई किया। कुछ सरल हैं, कुछ कठिन हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं। ऐसे करीब 200 श्लोकों को मैंने बच्चों के सामने रखा। उसमें जो चुनिंदा 100 पहेलियाँ थी उनको इसमें सरल, मध्यम और कठिन की श्रेणी में मैंने अरेंज किया, ताकि हर संस्कृत कक्षा के छात्र के लिए वो पुस्तक उपयोगी हो सके। साथ ही साथ जब पहेलिकाओं के उत्तर न मिले, ऐसी स्थिति में पेज पलटने मात्र से उन पहेलिकाओं के उत्तर वहाँ सचित्र उपस्थापित थे। साथ ही वर्ग पहेलिका के रूप में भी गुप्त रूप से उत्तरों को अंकित करने की व्यवस्था मैंने की। साथ ही संपूर्ण पुस्तक आर्ट पेपर पे है। इसका प्रयोजन ये था कि पाठक का यदि वो स्केच पेन और हाइलाइटर से वर्ग पहेलिका में वो चिन्हित कर देता है तो किसी दूसरे पाठक के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से यदि ये एक आर्ट पेपर पर प्रकाशित हुई है तो सामान्य कोई कपड़ा से पूछ करके उसको दूसरे पाठक के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है और उत्तरान्वेषण के लिए द्वितीय पाठक को दे सकता है। इस प्रकार यह पुस्तक बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। पुस्तक के परिशिष्ट में सभी उत्तरों की न्याय संगतता भी बताई गई है।
साथ ही राजा और रानी के संवाद के रूप में 50 संस्कृत के पारंपरिक प्रहेलिकाओं का भी संकलन इसमें प्रकाशित किया गया। प्रहेलिका वास्तव में मूल्यांकन की एक ऐसी विधा है जिसमें स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर तीनों का एक साथ एक समय पर परीक्षण संभव हो सकता है। अतः इस पुस्तक के माध्यम से विद्यालयों में संस्कृत प्रहेलिका सत्रों का भी हम आयोजन कर सकते हैं ताकि रोचक तरीके से छात्र संस्कृत की ओर आकृष्ट हो सके। पुस्तक के आरंभ में संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने अनुशंसा प्रकट की थी। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। साथ ही प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जी इत्यादि अनेक विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका पद पर मुझे सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रकाशन उपरांत प्रोफेसर वाई.एस. रमेश जी, प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर एच.आर. विश्वास जी, इन सभी ने मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं इस अवसर पर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक जरूर हूँ, लेखक लोगों की प्रेरणा और मनोबल बढ़ाने से ही बन सका। पुस्तक के प्रकाशन उपरांत इसी वर्ष मेरी 2 अन्य पुस्तकें भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई है। तो इन सभी को मैं इस मंच से बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ आप लोगों के साक्ष्य में। अंत में पुस्तक के प्रकाशक श्री सुशील कुमार जी को, जो कि आइडियल पब्लिकेशन जयपुर के वो हैं, उसके निदेशक हैं, स्वामी हैं, उनको इस विशेष उपलब्धि पर मैं उनका स्मरण करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी पंडित जानकी वल्लभ शर्मा एवं संतोष भरद्वाज मेरी माता जी एवं सभी गुरुजनों को बारंबार स्मरण करता हुआ अंतिम में सहधर्मणी श्रीमती अर्चना को भी मैं स्मरण करता हूँ और आप सभी गुरुजनों को मैं पुण्य प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरा वक्तव्य सुनने की कृपा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी। नाउ आई रिक्वेस्ट गणेश मरांडी जी, संथाली अवार्ड विनर, टू प्लीज कम ऑन द डायस। Respected Mr. Moti Kaushik ji, Vice President of Sahitya Akademi, and all the dignitaries present here. First of all, I would like to extend my sincere regards to respected Secretary, the offices of Sahitya Akademi, and esteemed our writers. India is multilingual and multicultural country. We have myriads of languages, dialects and civilizations all over India. Literature of each and every language has its own uniqueness and richness. No country in this world is like India, which has given linguistic and literary diversity. This diversity of language and culture gives a message of unity and fraternity. For me, writing is like a journey. My journey and eagerness to write something is similar to my beloved country. I began my writing journey through poetry since school days. I love poetry. It has its own charm. I have an emotional attachment to literature because literature teaches us how to live a life. It teaches us about own identity. It's very difficult to identify one's own self. Literature minimizes the hurdles on its path. If we want to lead a life of good citizen, we have to understand the pain and sufferings of the masses. Literature presents the pain and sufferings of the common people before our eyes. Due to this reason, I am attached with literature. I think children literature of each language has an important role in the development of language, literature and culture. It is the basement of literature. It gives a completeness to a literature of a particular language. So, this is rightly considered as an integrated part of literature and culture.
Santali literature is a progress literature. It is growing up day by day in India. In short, when humanity is dying, I cannot help but write. I write for the people who lost their faces. I write for the people who are losing their lives every moment. I write for the women who sob in silence. I write for the children who have lost their childlikeness in the consumerist culture. I write for the children who will hold lamp in our darkness. I write to identify myself with them. In conclusion, I must document my heartfelt gratitude to Sahitya Akademi for inspiring writers like me through the Bal Sahitya Puraskar and other awards. Thank you all and Johar. थैंक यू गणेश मराठी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदी के श्री मनोहर निहलानी। आप वहीं बैठ के तो नहीं होगी हमें। अगर दिक्कत है तो आप यहीं से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। हेलो, परम श्रद्धेय साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, मंच पर उपस्थित महान भाव, देश के विभिन्न भाषाओं के बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, सभी साहित्यकार गण, इस सभा में पधारे साहित्य प्रेमियों, आप सभी को मनोहर निहालन का प्रेम भरा नमस्कार। बंधुगण, मैं सर्वप्रथम साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों के लिए पुस्तक चयन करता हूँ एवं जूरी से सिंधी भाषा के उन विद्वानों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी पुस्तक अनोखी आखानी को बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना। उसके पहले मुझे गुजरात साहित्य अकादमी की ओर से 21वें गौरव पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मान्यवर, वैसे तो मैं राजस्थान में रहकर हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, अतः मैं हिंदी की ओर प्रेरित था। मैंने एमए भी हिंदी साहित्य से किया है, लेकिन किन्हीं कारणवश हमारा गुजरात में आना हुआ। वहाँ मुझे सिंधी का वातावरण मिला, इसलिए मैं सिंधी की ओर आकर्षित हुआ। कुछ सिंधी लेखकों से जान पहचान हुई। उनके प्रोत्साहन करने पर मैंने भी सिंधी में लिखना शुरू किया। वैसे अभ्यास भी आवश्यक है, इसलिए मैंने सिंधी में भी एमए कर लिया। वैसे 1965 में तो सिंधी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल 11 थे। कई स्कूल बोर्ड और म्यूनिसिपल और प्राइमरी स्कूल थे, मगर धीरे धीरे बच्चों एवं उनके माता पिता के मन में सिंधी भाषा के प्रति हीन भावना ग्रसित हुई कि सिंधी माध्यम के द्वारा पढ़ाई करने में हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। अतः वे अंग्रेजी भाषा की ओर अग्रसर हुए। धीरे धीरे सिंधी स्कूल बंद होते गए और आज यह स्थिति है कि सिंधी माध्यम से सभी स्कूल बंद हो गए हैं। सिंधी पत्रिकाएं भी बंद हो गई। देखा जाए तो प्रिंट मीडिया का काम महंगा जरूर है, लेकिन फिर भी लेखकगण अपनी लेखनी को विराम न देकर लिखते ही रहते हैं
सिंधी पाठक नहीं हैं, फिर भी लेखक लिख रहे। आज सिंधी समाज के आगे सबसे बड़ा खतरा हमारे अस्तित्व के गायब होने का है। धीरे धीरे सिंधी संस्कृति, सिंधी भाषा और सिंधी साहित्य जन साधारण से लुप्त होता जा रहा है। सिंधी भाषा बोलने में भी लोगों को शर्म आती है। सिंधी सभ्यता, सिंधी रीति रिवाज, सिंधी पहनावा आदि से प्रेम रखने वाले सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति को बचाने के लिए चिंतित है। अगर हमें सिंधी संस्कृति की ओर पूर्वजों की धरोहर को बचाकर रखना है तो वह तभी संभव हो पाएगा जब हम नई पीढ़ी के युवाओं एवं बच्चों को सिंधी सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार के प्रति प्रेरित करें। उन्हें आभास कराएं कि हमारी सिंधी भाषा और साहित्य अन्य भाषाओं की तरह ही प्राचीन और समृद्ध है। यह सब तभी होगा जब बच्चों में सिंधी भाषा पढ़ने के लिए उत्साह और उमंग होगा। आज बच्चों से सिंधी भाषा के प्रति लालसा उत्पन्न करने की आवश्यकता है और वह तभी संभव हो पाएगा जब बाल साहित्य ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ रोचक और सरल सहज भाषा में हो। वैसे देखा जाए तो हमारे साहित्यकारों ने बाल साहित्य की रचना की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है, किंतु जितना ध्यान बड़ों के साहित्य लेखन की ओर दिया जाता है उतना बाल साहित्य की ओर नहीं दिया जाता। अतः जितना बाल साहित्य रचा जाना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बाल साहित्य की समालोचना नहीं के बराबर होती है। बाल लेखकों की रचनाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। रचनाकार को जब तक उनकी रचनाओं के द्वारा उत्साहित नहीं किया जाता, उनकी रचनाओं के गुण दोष नहीं बताए जाते, उनकी भाषा शैली कैसी है, उनके आलेखों की विवेचना नहीं होती, तब तक उनका उत्साह नहीं बढ़ता। लिखने के लिए वे प्रेरित नहीं होते। हाँ, एक बात यह भी है कि वही टीका टिप्पणी निष्पक्ष बिना किसी द्वेष भाव के होनी चाहिए। यह भी सत्य है कि कठोर आलोचना भी कलाकार को, कलमकार को निराश कर देती है। बाल साहित्य लिखना बड़ी जिम्मेदारी का कठिन कार्य है, क्योंकि लेखक को लिखते समय एक एक वाक्य, एक एक परिचित को सोच समझ कर लिखना पड़ता है, क्योंकि उसका बच्चों के कोमल हृदय पर और मानसिकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाल साहित्यकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह काम निभा रहे हैं और बाल साहित्य ही भाषा की नींव का पत्थर होता है। यदि सिंधी भाषा को खत्म होने से बचाना है तो उसका उपचार केवल सिंधी बाल साहित्य का निर्माण ही है। उसमें भी कविताएं और कहानियों में बच्चों की ज़्यादा रुचि होती है। कविता गाकर सुनाने से बच्चों को आनंद मिलता है। कविताएं संगीत के द्वारा कैसेट में भरकर बच्चों को सुनाई जाती थी। आजकल एक्शन के साथ बच्चों को कहानियाँ, कविताएं सुनाई जाती है। हमारे विद्वान साहित्यकार
अपने पूरे परिश्रम और लगन के साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, बच्चों के जीवन चरित्र, निबंध आदि के बाल साहित्य की रचना कर रही है, जिसे पढ़कर बच्चे गुणकारी, सदाचारी, सभ्य और संस्कारी हैं। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सरकारी संस्थाएं भी है जो लेखकों को पुस्तक छपवाने के लिए आर्थिक सहायता देती है और पुरस्कार देकर गौरव प्रदान करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे रचनाकारों को जो सिंधी भाषा को मरने से बचाने एवं हमारे अस्तित्व को गुम होने से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नीलानी जी। नाउ आई रिक्वेस्ट मैडम जी मीनाक्षी, सभी अवार्ड विनर, तो प्लीज कम ऑन डायस। Good afternoon and a warm welcome to everyone present here. I feel honored and privileged to be the recipient of the prestigious Bal Sahitya Puraskar Award. Standing in front of you with this award gives me immense joy, and first of all I want to convey my heartfelt gratitude to the Sahitya Akademi committee for bestowing upon me this honor. I would also like to take this opportunity to congratulate each and every winner of this year's Sahitya Akademi Awards. Feels great to be in a room full of talented and wonderful people. People who are from Tamil Nadu might know this. This year is writer Ala Valliyappa's centenary year. He is known as the children's poet of Tamil Nadu. He was the person who inspired me to write for children. When I was younger, I grew up listening to his stories and enjoying his poems. Almost every children's literature award in Tamil Nadu is named after him. Such is the legacy that the man has created for himself. Having said that, on such a special occasion, on the centenary year of year of the writer that I admire the most, I feel proud standing in front of you, having received this award representing my state of Tamil Nadu. To talk a bit about myself, I have been a journalist for the last 30 years, working across various Tamil newspapers and magazines. Writing has been a part of my life ever since my childhood. I was thrilled when I sent out my first short story through a mail post to All India Radio Coimbatore, and it was broadcasted in my own voice when I was just 12 years old. I have written and published 5 short story collections for children and written articles in various weekly magazines. Other than that, I have written and published 4 short story collections for adults, 2 novels and a self-help book. I love writing stories for children. Though I have worked on numerous short stories and articles for adults, I feel an overwhelming joy in narrating stories for children which just cannot be described in words. The reason being, children who read these stories will try to take in the good morals, spread their creative wings and start flying great heights. The awarded book, Mallikavin Veedu, comprises of 16 short stories. Most of these stories in this book
have been inspired by two incidents. Some of the characters in this book are living amongst us in some part of the world. Only the story plot and the techniques that I use to improve the story are imaginary. I have penned the stories in such a way that each story conveys a good moral. Storytelling should not only be a time pass, but also a medium to cultivate general knowledge. I have strived to instill greenery through my stories. I have set out to create a green nation, a nation where every youth takes effort to preserve the environment. My desire is to help develop patriotism, social thinking, and the thought of helping poor people and caring for fellow human beings in the minds of the children reading this book. I hope these stories bring good awareness among children. In our childhood, we would have read about angels, ghosts, flying carpets, magic lamps, talking animals, and so many more unreal characters written by talented writers. We can never forget the excitement and the inspiration that these stories would have impacted us with. Today, more than fairy tales, the current scenario demands stories which stress the importance of planting trees, stories about environmental awareness, good moral stories, and stories about the effects of latest technology. This is the need of the hour. In this day and age, where storytelling grandmothers and storytellers have reduced, my intention is to plant socially responsible morals in the minds of the children by providing quality stories. This award and recognition motivates me and further inspires me to write more for children and to create a positive impact on the young minds. I once again thank the Sahitya Akademi for this prestigious honor. Thank you. Thanks, Meenakshi ji. Now I request P. Mohan, Telugu Award winner, to please come up to that. అందరికీ నమస్కారం. జ్యోతలినే అందుకొను గాంధీ తాత, భరత జాతి కంతటికి స్ఫూర్తి ప్రధాత, శిరమెత్తిన స్వేచ్ఛకు నీ పిలక ప్రతీక, నీ పోసిన వేగత భరత జాతి జాతిక. These students from my award winning people who introduce my sweetness of my mother tongue Telugu. Basically, I am from the youngest state of India, Telangana. First of all, I wish to salute and pay my tribute to my parents, Amma Gangabai and Babu Sri Lakshminarayan, for giving me this wonderful life. And my teachers, right from the day when I started learning alphabet in school and obtained higher education in university. I want to thank them for encouraging and inspiring me to read and write and empowering me with the knowledge. This prestigious award has been accorded to me because of thousands of children who are always in my mind and inspire me to write. Although epic writing in Telugu is over 1500 years old, the traditional children's literature existed even before that. It originated in the oral form and was passed on from one generation to another by grandmothers, grandfathers, uncles and aunts. This tradition is still continuing. Thus thousands of children, folk songs, play songs, jazz songs, festival songs and temple songs befitting the demand of situation were created by mothers. In this genre, a mother used to sing to her beloved child, Lali Bangaru Bomma, Lali Mudura Bomma, Jo Achyutananda, Jojo Mukunda, Lai, Daya Daya Pitta, Daya Galla Pitta. All these songs in my childhood, even my mother used to sing them to my children also right now. I believe that children's writing should provide wisdom, entertainment, happiness and excitement to children. Thus I choose music as conduct of my thoughts and started writing lyrics for children. Later I also penned in other genres also. It began in 1986 when
brief in that. Whenever I was in 7th class, it is in 1986 when I was in the 7th class standard, and I penned my first poem with the encouragement of my Telugu teacher, Sri Devadas Rao garu. And later my grandfather, Brahma Shri Patipaka Shankaraya Pandulu, he influenced me since the childhood. My first book has till today 50 books are credited in my account. My first book as a poet, critic and translator was published in 1994. Then in 1997, I again turned my focus towards children literature. My writing for children, which began in 1997 and proliferated in 1998 when I worked as a resident teacher of Telugu at the Social Welfare Gurukulam. Due to the question asked by the innocent children, I started writing a column in a newspaper for children. After that, in Telugu editor's job at National Book Trust India helped me further. Constantly working amid the books and for books, children literature as the main focus led me to this prestigious Children Literature Award. On the occasion of the 150th birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi, my book Bharat Dada Bapuji is a gift to children, and through this book I wish to inculcate in them a love of poetry. This book is in 2 parts. The first part includes Gandhi's songs and the second part is Gandhi's lyrical story. Children can read and sing the songs in metrical rhythm themselves. These songs have been composed in simple and soft Telugu words to not only inform the children about the Gandhism, but also about Gandhi's philosophy, Gandhi's personality, Gandhi's religion, and Gandhi's leadership in the freedom struggle. Coincidentally, I am also celebrating Silver Jubilee of my writing for children this year. It's also important to me as we are also celebrating Azadi Ka Amrita Mahotsav, and I being honored with Sahitya Akademi, Bal Sahitya Puraskar is a milestone for me. I also wish to thank my Bedwa Chandana for she is here, for working together with me, for being everything to me, and my children Moksha, Veda Samhita, Anut Shankar, Abhidev Shankar, who are always there in my thoughts and words, and for being my greatest support. Finally, I dedicate my award to my parents, teachers, and my Guru, Jnanpith Awardee, Mahakavi Sahitya Akademi fellow Dr. C. Narayan Reddy garu. My Hindi is not good if compared with my Urdu. अकादमी से मुझे जो तहनीयत पेश किया है उसके लिए चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब माधव कौशिक जी और अकादमी के सभी मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इसके लिए मेरा पास अल्फाज नहीं है सर. शुक्रिया. जय हिंद, जय तेलंगाना, जय हो बाल साहित्य. धन्यवाद मोहन जी. अब मैं आमंत्रित करता हूँ जफर कमाली साहब को, उर्दू के पुरस्कार में जीता है. जफर साहब से निवेदन है थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे, अच्छा रहेगा. उर्दू वाले मुख्तर अल्फाज में बहुत बड़ी बात कहते हैं. हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के मायानाम शुअरा और मुसन्निफ़ीन और दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन है. मैं ज़िला सीवान बिहार के छोटे से गांव रानीपुर का रहने वाला हूं और हर तरह के अदबी हंगामों से दूर रहते हुए एक गोशे में बड़ी खामोशी से लिखने पढ़ने का काम करता हूँ. 1981-82 से मुसलसल लिख पढ़ रहा हूँ, लेकिन 40 बरस की मुसलसल रियासत के बाद भी कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मुल्क के मुमताज़ अदबी अदारे साहित्य अकादमी की जानिब से मुझे इनाम के लिए मुंतखब किया जाएगा. इस इनाम का मिलना मेरे लिए खुशी और हैरत दोनों का सबब है. इस इनायत के लिए मैं साहित्य अकादमी के जिम्मेदारान और जेवरी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ. अपनी अदबी ज़िंदगी का जब भी जायज़ा लेता हूँ तो मुझे अपनी प्यारी दादी मोहतरमा अज़ीज़ुन्निसा मरहूमा की याद आती है,
जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ न सिर्फ सुनाई बल्कि पढ़वाई भी। उन्हीं के जरिए शेर व शायरी की आवाज़ भी मेरे कानों में पहुँची। घर के तकरीबन सभी लोग किताबों के शौकीन थे। मेरे नाना, जिनका नाम शमसुद्दीन था, वो पुरुलिया बंगाल में मुलाजमत करते थे। वो जब भी अपने घर रानीपुर आते तो बच्चों के ढेर सारे उर्दू रसाले अपने साथ लाते। हम लोग उन्हें नहायत शौक से पढ़ते। उन रसालों में खिलौना और नूर के तो गोया हम दीवाने थे। उन रसायल और इब्न सफ़ी के जासूसी नावलों को पढ़कर लिखने का शौक़ पैदा हुआ। इस्लामिया कॉलेज सिवान में इंटर में दाखिला लिया तो वहाँ मशहूर ज़राफ़त निगार जनाब अहमद जमाल बादशाह ने न सिर्फ हमें उर्दू पढ़ाई बल्कि अदब का ज़ौक़ भी हमारी नस नस में पैवस्त कर दिया। मेरी दादी और अहमद जमाल बादशाह जैसे लोग अगर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा न होते तो शायद मैं आज आप सबके सामने खड़े होने के काबिल न होता। अब तक मेरी 18 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें 10 शेरी मजमूए हैं। उन मजमूओं में 3 का ताल्लुक़ बच्चों के अदब से है। मैंने तहक़ीक़, तनक़ीद, ज़रीफ़ाना शायरी और रुबाई के मैदान में मक़बूल भर लिखने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि बच्चों की शायरी पर मुझे इनाम से नवाजा गया है, इसलिए अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से ही बतौर ख़ास अपने कुछ मालूमात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों के लिए लिखना सहल मुमतना में शेर कहना है। बज़ाहिर बहुत आसान, हकीकतन नहायत मुश्किल। नस्र के मुकाबले शायरी में जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। ये अमल पुलसिरात पर चलने के मुतरादिफ है। इम्तियाज़ अली अशी ने एक जगह लिखा है कि बच्चों की शायरी हफ्ज़ खाने रुस्तम से कम नहीं, इसके लिए दिमाग को बैक वक्त पुख्ता और खाम रखना होता है। जिस तरह मदारी टोपी से खरगोश और खरगोश से टोपी निकालता है, इसी तरह यहाँ बेबात की बात में भी बात पैदा की जाती है। छोटे बच्चों का शायर हमेशा नॉनसेंस में सेंस की तलाश करता रहता है। बच्चों की शायरी का वस्फ यह है कि उसकी ज़ुबान आम फहम यानी रोज़मर्रा से ताल्लुक़ रखती हो, उसलूब सादा और शगुफ्ता हो, बहर तरन्नुम रेज़ हो, लय और आहंग का ख्याल रखा गया हो और जज्बे की सदाकत को बुनियादी अहमियत दी गई हो। एक और चीज़ जो कलीदी अहमियत की हामिल है वो है शायर का बच्चों की नफ्सियात से पूरी तरह बाखबर होना और उनकी मासूमियत और भोलेपन को उसी अंदाज से महसूस करना। वो शायर जो बच्चों की नफ्सियात का इरफान नहीं रखता, उनकी मासूमियत के तहद्दुस को नहीं समझता और नादानी की लज़्ज़त से मज़ा नहीं उठा सकता, उसे ये हक हासिल नहीं तो वह इस ऊँचे का रुख करे। बच्चों के जज्बात और एहसासात को अक्ल की तराजू से नहीं तोला जा सकता। उनके यहाँ चिड़िया खीर पकाती, भालू बागबानी करता, सांप बकरियाँ चराता और गिलहरी की शादी में चूहा ढोल बजाता है। बच्चे पैसे और मिठाई का पेड़ लगाते हैं, वो काजल की मूछ बनाकर उस पर ताव देते हैं। उनकी मासूमियत बकरे को दूल्हा बनाती, खरगोश को बाती का दुपट्टा उठाती, कुत्ते को दादा का चश्मा पहनाती और बिल्ली को लिपस्टिक लगवाती है। जिन शुअरा ने बच्चों के जज्बात उनकी मासूम शरारतों के नुक्ते की अहमियत को समझा, कामयाबी ने उनके कदम चूमे। ज़ाती तौर पर मैं बच्चों के लिए जब भी लिखता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी बच्चा बन जाऊँ और उनकी ज़हनी सतह पर जाकर उन्हीं के अंदाज में सोचूँ। मेरी रवानियों के मजमूए चहकारे में आप इसकी सैकड़ों मिसालें तलाश कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी नस्लों में बच्चों की ज़हनी दिलचस्पी कायम रहे, उन्हें नसीहत के घोंट नहीं दिलाऊँ, जो बात भी कहूँ वो बहलाने फुसलाने के अंदाज में हो। तोतली ज़ुबान, फूल, तितली, चाँद, सितारे, खिलौने, परिंदे, जानवर, मेले ठेले और मनासिर फितरत की खूबसूरत अक्कासी से भी अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पेश नज़र ये नुक्ता भी रहता है कि हैरत व इस्तेजाब से भरपूर जादुई दुनिया और वहाँ की हैरत अंगेज़ जादुई फ़िज़ा बच्चों के जहन को बहुत रास आती है। बदलते हालात के मुताबिक बच्चों में माहौलियात की समझ पैदा करने की खातिर पेड़ पौधों और
कहानी की अहमियत जैसे मसाइल पर मैंने दिलचस्प राय में लिखने की कोशिश की है। अच्छी आदतें, गरीबों का एहतराम, रिश्ते नातों का लिहाज, आपसी भाईचारा और अपने वतन की सच्ची मोहब्बत जैसे मसाइल को मैंने अपनी शायरी में जगह देकर बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाने की पूरी कोशिश की है। मैंने ज़राफ़त का सहारा लेकर भी नज़्मों, ग़ज़लों और रुबाइयों में बच्चों की नफ्सियात, उनके जज्बात और उनके भोलेपन को उजागर किया। मैं महसूस करता हूँ कि 63 बरस की उम्र में भी मेरे दिल में कोई मासूम बच्चा छुपा बैठा है जो मुझे देखकर उछलता, कूदता और हंसता मुस्कुराता है, जो अपनी शौकियों और मासूम अदाओं के ज़ोर पर मुझे मजबूर करता है कि मैं उस पर और उसके लिए लिखूं। और यकीन मानिए कि जब तक ये बच्चा मुझे अपनी मासूमियत के कसार में लिए रहेगा, मैं उसके लिए नज़्में, गीत और रुबाइयाँ लिखता रहूँगा। एक मरतबा फिर आप सबकी मोहब्बतों और इनायतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 24 भाषाओं के लेखकों ने अपने अपने अनुभव सुनाए, बताया कि वे किस तरह से वो लेखक बने। बाल साहित्य की थोड़ी समस्याओं पे भी बात हुई। आज का सेशन तो हमारा सिर्फ इतना था कि हम क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जाने, कैसे लेखक बने। समस्याओं के लिए तो हमारा सेमिनार चल रहा है यहाँ। एक हफ्ता हमने विद्वानों को बुलाया हुआ है एंड दे आर असेसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन लिटरेचर, देयर प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीकेशंस। एक बात, जब भी ये बाल साहित्य का आयोजन होता है तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। उसका एक कारण ये है कि 2008 में जब मैं पहली बार साहित्य अकादमी का सदस्य बन के आया हिंदी एडवाइजरी बोर्ड में, उससे पहले बाल साहित्य पुरस्कार नहीं था। जनरल काउंसिल में ये प्रस्ताव मैंने रखा था। बड़ी मुश्किल से पास हुआ और पास होने में 3 साल लगे। आज से 10-12 साल पहले तक बाल साहित्य की जो आज प्रतिष्ठा है वो पूरे देश में नहीं थी। एक दशक में ही सारी क्षेत्रीय अकादमियाँ बनी हैं। क्षेत्रों में जब साहित्य अकादमी ने शुरू किया तो एक तरह से सारी राज्य सरकारों ने उसकी कॉपी की। अब हर राज्य बाल साहित्य के पुरस्कार दे रहा है। कुछ राज्यों में बाल साहित्य के लिए अलग से अकादमियाँ भी बनी हैं। और एक और बहुत बड़ा काम साहित्य अकादमी ने किया कि जिनको हम इनाम देते हैं, इन्हीं किताबों को 24 भाषाओं में अनुवाद करा के पूरे देश में पहुंचाएंगे। तो वो समस्या भी अब खत्म हो जाएगी कि भाई पहले तो केवल एनबीटी ये काम करता था, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट करता था। अब साहित्य अकादमी ने पिछले 1 साल से बहुत सारा बाल साहित्य प्रकाशित किया है। हमने एक स्टॉल अलग से लगाया और ये काम बड़े लेवल पे बहुत सालों बाद, अच्छी चीज़ें बहुत देर बाद समझ आती हैं। हमें भी बड़ी देर बाद समझ आई। लेकिन हिंदुस्तान के बाल साहित्य की तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो बड़ी हैरानी भी होती है। मैं 2 साल पहले मैक्सिको गया था, एक वर्ल्ड बुक फेयर था, वहाँ पूरी दुनिया के लेखक आए थे। तो मैंने देखा कि स्पेनिश में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में चिल्ड्रन लिटरेचर की किताबें, उनका स्तर बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बड़ा कारण तो है कि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। वहाँ के पिता को $1000 की किताब खरीदते हुए तकलीफ नहीं होती। हमारे यहाँ ये भी है। दूसरा, हमारे स्कूलों में अभी लाइब्रेरियाँ बच्चों के लिए नहीं बन पाई हैं, कोशिशें जारी हैं और ये होने जा रहा है। कुछ सालों में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे देश का जो फ्लोरा और फौना है उसकी असली महक बाल साहित्य में है।
मणिपुर के बाल साहित्य को पढ़ते हुए आपको मणिपुर की सारी वन्य प्राणियों का, सारी वनस्पतियों का पता लगता है। तेलंगाना को पढ़ते हुए उसके रीति रिवाजों का पता लगता है। दक्षिण के प्रांतों की अलग खुशबू है, पहाड़ी प्रदेशों की अलग खुशबू है, और इवन के आदिवासी क्षेत्रों में जो बाल साहित्य रचा जा रहा है उसका तो और ही स्वाद है। ये विविधता दुनिया में और कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। एक बात और कहते हुए बिल्कुल मुझे गर्व होता है, और ये सच है, आने वाला दशक बाल साहित्य का है। अब मैं बाल साहित्य के आपका वेन्यू गिनाऊंगा, आप हैरान रहेंगे। आप अपने टेलीविजन को खोल के देखना, बच्चों के कम से कम 25 चैनल हैं, 24 घंटे आयोजन होते हैं, 24 घंटे प्रोग्राम चलते हैं। किसी ने तो उसका टेक्स्ट लिखा ही है। कभी सोच के देखिए, वो जो सेलुलाइड पे चीज आई है सबसे पहले कागज पे उतरी होगी वो। और ये जो अंग्रेजी जितने हिंदी में डब हो रहे हैं दक्षिण भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में, एक सीमा पे जाके समाप्त हो जाएंगे। आपकी किताबों को ढूंढने लगे हैं। हम जैसे जो बहुत सारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे लेखकों के नाम मांगते हैं, किताबों के नाम हमसे पूछे जाते हैं कि हमें वो किताबें बताइए जिसपे हम बच्चों का सीरियल बना सकें। तो आपका जो अब जो प्रतिद्वंद्वी, पहले तो सिर्फ ये था कि हमारी किताबें बड़े अच्छे से आनी चाहिए, अब बाल साहित्य के लेखक के सामने ये जो चैनल हैं एक चुनौती दे रहे हैं। आपके अगर लिटरेचर में पिक्टोरियल क्वालिटी नहीं है, आप इतना विजन नहीं दे सकते, आपकी पूरी किताब के 20 पन्नों को वो डायरेक्टर एक शॉट में फिल्मा सकता है। तो आपकी भाषा का आपको साइट्स और साउंड्स में फर्क करना भी आना चाहिए। बाल साहित्य के लिए आने वाले वक्त में अपरिमित सीमाएं हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी संभावना है, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज का जो बच्चा है, अब इतने सारे इनाम हमने 24 भाषाओं के दिए, संभवतः इसमें एक भी किताब नहीं है जो साइंस फिक्शन की हो। हिंदुस्तान का लेखक साइंस फिक्शन से बहुत दूर है, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अब साइंटिफिक फैंटेसी भी तो होती है। फैंटेसी केवल दंत कथाओं में ऐसी थोड़ी है, दुनिया में कौतूहल आप कहीं भी जगा सकते हैं, तो साहित्यकारों को जगाना पड़ेगा। तो आने वाला जो समाज बदल रहा है जितनी तेजी से, हमें भी अपने कलम के औजारों को उतना तीखा बनाना पड़ेगा। आज का बच्चा जू की सैर नहीं करना चाहता है, आज का बच्चा जू की बजाय मंगल पे जाना चाहता है। जू तो उसने देख लिया, डिस्कवरी चैनल ने उसको पूरी दुनिया के जानवरों से परिचित करा दिया। उसको ये मालूम है सांप क्या करता है, वो क्या करता है। अब उसकी कल्पना की जो स्थितियां थी, नवयुग का बालक उससे बहुत आगे आ चुका है। तो अगर हमें अपने बाल साहित्य को वैश्विक स्तर तक लेके जाना है तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब पूरा देश एक तरह से अब हमें कुमार अनुपम बताते हैं कि साहित्य अकादमी की जो किताबों की खरीद है बच्चों की, वो करोड़ों में होती है। आप कहते हैं किताबें बिक नहीं रही हैं। हमारे एक चंडीगढ़ में लेखक हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनकी 20 पेज की किताब कोई 20 साल पहले छपी थी, अब उसकी 2.5 लाख प्रतियां एनपीटी ने छापी हैं और उनको 3,31,000 रुपए की रॉयल्टी पिछले महीने मिली। तो चीजें हैं, लेकिन आपकी गुणवत्ता भी तो चाहिए। वो पुस्तक जो 20 साल पहले छपी थी, अब पता लगा यार इसकी तो राइम स्कीम कमाल की है, ये तो सब बच्चों के पास जानी चाहिए। तो शिक्षा का जो प्रसार प्रचार हो रहा है, और अब जो नई जो शिक्षा प्रणाली आई है कि हमें अपनी मातृभाषाओं में बच्चों को पढ़ाना है, उसका आगे असर कुछ सालों में आएगा। कुछ सालों बाद आप देखोगे कि बाल साहित्य का लेखक, अब भी बाल साहित्य का लेखक जो हमारा हिंदुस्तान का है,
इसमें कोई दो राय नहीं। उससे ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति कोई नहीं है, उससे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। बच्चों के अंदर जो दैवी शक्तियाँ हैं, आप उसके अनुवादक हैं, आप इंटरप्रेटर ऑफ डिवाइन इनोसेंस हैं, और उसी वजह से दुनिया थोड़ी बहुत बची हुई है। मेरे फादर साहब कई बार हंस के कहते थे कि दुनिया का जितने काम धंधे हैं, जितने रोजगार हैं, हर आदमी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपने एटीट्यूड एप्टीट्यूड के मुताबिक ले लेता है। दुनिया में लेखन एक ऐसा काम है जिसके लिए प्रकृति व्यक्ति को चुनती है। नाउ नेचर है चोजन यू। और जो बाल साहित्य का लेखक है वो तो मेरे ख्याल में नेचर का सबसे प्यारा वंशज है। क्योंकि अगर आपको देवत्व कहीं देखना है तो बच्चे में ही देवत्व मिलेगा। दूसरी बात एक और, बहुत सारे से आप जैसे विद्वानों ने ही हमें बताया, अब भारत में बच्चों के दो वर्ग हैं साफ साफ। एक वर्ग वो है जो इंडिया में रहता है, दूसरा वर्ग वो है जो भारत में रहता है। अब आप किस बच्चे के लिए लिख रहे हैं ये ध्यान में रखें। अगर आप भारत के बच्चे के लिए इंडिया का मसाला देंगे उसके समझ नहीं आएगा, और अगर इंडिया वाले बच्चे को भारत का देंगे तो उसके भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं एक सेतु बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों के अंदर एक समरसता होती है। वैल्यूज के मुकाबले में बच्चे अपनी संवेदना के मुकाबले में, चाहे राजमहल का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, लेकिन बचपन एक जैसा है, उसका रंग एक जैसा है, उसके अंदर संवेदनशीलता एक जैसी है। वो संवेदनशीलता अंदर दबी हुई है, वो सरस्वती की तरह लुप्त है, उसको आपने सामने ला के आना। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका IQ बहुत साधना संपन्न और साधन संपन्न बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। उनको जिंदगी की समझ सबसे अधिक होती है। तो आपको उन बच्चों की जिनकी जिंदगी की समझ है उस समझ को और ज़्यादा बढ़ाना है, और जिनको जिंदगी की समझ नहीं है उनको आपको संवेदनशील भी बनाना है। ये दोनों काम, और भगवान ने आपको मुश्किल काम करने के लिए पैदा किया है। जो आदमी पैसे के लिए सोचता होगा वो तो लेखक बनेगा क्यों? उसके लिए तो दुकानदारियाँ बहुत है। हम वो सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं, इसलिए भगवान करे आपकी कलम इसी तरह जमती रहे, चलती रहे। आपकी कलम विकसित होगी तो ये देश भी बड़ा होगा और अपने बच्चे भी बड़े होंगे और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जो हो कलम और दिया जा। बहुत बहुत धन्यवाद माधव कौशिक जी। माधव कौशिक जी ने बाल साहित्य के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि संभावनाओं का कितना बड़ा क्षितिज खुल गया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जब बच्चों के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हैं, इस पर कितना तरह का कंटेंट है और वो कंटेंट अंततः लेखकों से ही लिखवाया जाता है। तो अब बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं लेखन के। अब किताबें सिर्फ कागज़ पर ही नहीं छपती हैं, अब ई-बुक भी है। तो आपको कितने अपने को विकसित करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ आपके प्रति और आप सभी के प्रति। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में भी बताया और अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। मैं ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करता हूँ। आप सभी भोजन के लिए प्रथम तल पर आमंत्रित हैं। नमस्कार।